check. Hello. Check. Yes. Yes, very good morning, my dear friends. Guys, good morning. Right, wonderful. So which chapter we started discussion, my dear friends? Residential status. We have discussed only the general points, but we have some special points to talk, which we'll spend some very good time today. And today we'll also look at solving some problems. Are we ready? Everybody? Good. Guys, come on, tell me what is section 27? 28. Assessment. 29. Assessment year. 210 beta. Average rate of tax. Tax divided by income into 100. This point we discussed when we solved questions yesterday in the morning. अब टाइम भी बोलो क्या? ठीक. 225, 224. Income 231, 234. Section 3. Section 4. Charitable section. How many exceptions are there? 5. What is section 172? Shipping business of non-resident. 174. Person leaving India permanently or for long time. 174A. AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. 175. Person likely to transfer property to avoid tax. 176. Discontinued business. Correct, my dear friends? What is section 87A beta? Rebate. Only for resident individual whose total income does not exceed 5 lakh. Kitna beta rebate? Tax payable or 12,500, whichever is lower. Correct? What is section 288A? Rounding off of income. 288B. Rounding off of tax. Clear hai? What is section 80TTA? Interest on savings bank account. Beta deduction kitna hai? Interest or 10,000, whichever is lower. But since that is interest income, first we'll show it as income under income from other sources, then we'll claim deduction. Clear? And there is only for other than senior citizen. Because for senior citizen, there is something called 80TTB, which we'll talk separately. This card deduction is 50,000. You're getting my point? So for people like all of us, since we all belong to same generation, ours is 80TTA. Okay? Our parents, if they would have become a senior, they'll come under 80TTB. Are we clear? Everybody? And deductions are also slightly different. For example, 80D talks about deduction for medical insurance premium. If you are not a senior citizen, amount of deduction is different. If you are a senior citizen, the amount of deduction is different. So deduction limit is based on senior or non-senior. That's why I told you that in a lot of sections like deduction and exemption, we have got some condition restriction. Based on that, we will decide how much is your deduction. Getting clarity, everybody? Pakka clear hai sabko ye baat? Good. Next, my dear friends, I wanted to ask, what is section 112? Long-term capital gain. Kya hai beta? General rate. 20%. When I say general rate, except that which is covered in 112A. Except 112A, सब कुछ आएगा ना यार. 112A क्या है? Long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented fund or units of business trust through recognized stock exchange on which will tax at the rate of 10% on amount not exceeding 1 lakh. बराबर ना यार? Please, ध्यान से सुनो. Yeah, good. Same case, not long term but short term. Which section? क्या रेट है बेटा? 15%. Other short term? Taxable under slab rates. अरे यार, when I go to capital gains chapter, very soon, maybe not now, after 10-15 days or so, when I go to capital gains chapter, that time again I'll not teach you tax rate. I'll make you recollect, but I'll not teach again. हम रिकलेक्ट करेंगे बेटा, याद है ना हम लोग डिस्कस करते फर्स्ट चैप्टर में, आप बोलेंगे हाँ सर एग्जैक्टली. बियॉन्ड दैट रिएक्शन व्हाट आई वांट इज सर बेटा पता है ना, हाँ सर वही ना 10-15 स्लैब रेट 20% पता है सर. क्या है आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं हमको. दैट फीलिंग शुड कम. बाय दैट टाइम विल रिवाइज लाइक एनीथिंग. क्लियर? नेक्स्ट 115 BB कैजुअल इनकम. एक्सीलेंट, फुल फास्ट साउंड है यार. 115 BB अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो या इन्वेस्टमेंट हो एक्सपेंडिचर हो, भैया तू एक्सप्लेन कर. नहीं किया बेटा तो खत्म. यू गेटिंग माई पॉइंट? नो एवरीबडी. गौरव आप पुणे से हो? लोकल है? अच्छा वंडरफुल.
गौरव ने गया कोई होटल पे विथ हिज फ्यूचर गर्लफ्रेंड या एंड पापा ने देख लिया वहां पे होटल में, पूछ रहा है बेटा कौन है? पापा वो ना, वो मैं बताता हूँ आपको, सुनो पहले। तो पापा का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा ना यार, क्या बोलेंगे पापा? पहले एक्सप्लेन कर, पहले बता कौन है, उसके बाद कुछ बात कर। तो क्या बोलेंगे गौरव? होने वाले बहू है, प्रणाम कर। Just joking, come on. Yes, so 115 BB is what? Casual income. 115 BB क्या है बेटा? Unexplained incomes. Are we clear with this point? चलो, without delay, now let's proceed to and get back to our chapter residential status. उसमें थोड़ा सा points हो गया बेटा, but we have some special points to talk in that, and we'll discuss some interesting questions also in that. Let's get ready. Come on. We have still been discussing the concept of residential status for individual only. Do you agree to that? Everybody? Which section is that individual? Section 6.1 and section 6.6. बोलो बेटा 6.1 क्या है? Basic conditions. Just 1 second. Perfect. बोलो बेटा 6.1 is what? Basic conditions. How many are there? 2. What are the 2 conditions? First one. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. When you say India, you mean to say Maharashtra? You mean to say Telangana? Where? 225A. इतना क्यों इधर उधर सब क्यों बोलना है भाई? एक ही लाइन बोलेंगे 225A. हो गया ना आंसर? क्लियर है ना सर? चलो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? कम ऑन. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Satisfy any of this basic condition, beta हम आपको क्या बोलेंगे? Resident. Satisfy both, still you are resident. Both gone. And once you are non-resident, your tax treatment is different. If you are resident, tax treatment is different. What is that I told you? But we'll talk a lot of detailed points today. Are we ready? सब लोग ready? Everybody? All of us? And so, my dear friends, yesterday I told one very, very important line at the end of the class. I think you would have observed it. In order to tax any person, only 2 important parameters are there. Number 1, residential status. Number 2, nature of income. Perfect. Status check करो, nature of income check करो. अगर वो इंडियन इनकम है तो स्टेटस देखने की जरूरत ही नहीं है, उसको पकड़ो, टैक्स करो. भाई इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल. हम चेक करें ना कल ROR, RNOR, NR. In all the 3 cases we told Indian income is taxable. All right. NR taxable only for foreign income. NR is taxable only for Indian income. RNOR is taxable for Indian income and foreign income in 2 cases. क्या है बेटा 2 cases? Business income which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is, यार ये वापस रिवर्स करना पड़ेगा. Come on बेटा, सुनो ध्यान से. I'll put it in different way. Yesterday I wrote in different way. Now I'll write in different way. Yesterday we wrote ROR, RNOR, NR. याद है ना? Now let me divide into 2 parts. Reverse way of writing. कुछ भी लिखो यार, कॉन्सेप्ट तो एक ही है. Indian income, foreign income. Indian income, what will happen? Taxable for all. When I say all, what does that mean? ROR, RNOR, NR. And let me tell you very clearly, today I'll complete that. Only for individual only we have got a concept of ROR, RNOR, individual and HUF. But for others, there is no concept called OR, NOR, nothing is there. Only R and NR, that's it. Clear everybody? और वो सबके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इंडिविजुअल का ही बड़ा कहानी है, बिकॉज वही बंदा है जिसको एक जगह रुकता नहीं, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते. क्लियर है? फॉरेन इनकम is taxable for ROR, taxable for RNOR only in 2 cases. बोलो बेटा 2 cases क्या है? नंबर 1, देख के बोलो, पढ़ के बोलो, कोई बात नहीं, प्लीज बताओ मुझे प्लीज. परफेक्ट होना है ये चीज. नंबर 1, बिजनेस इनकम which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is set up in India. प्रोफेशनल इनकम का मैं कल एग्जाम्पल भी दिया था. एग्जाम्पल 2, शिवा तेजा ऑफिस इन इंडिया, दैट वाज एग्जाम्पल 2 वाज प्रोफेशनल इनकम सेटअप इन इंडिया. ये 2 इनकम छोड़ के बाकी कोई भी फॉरेन इनकम वी विल नॉट टैक्स फॉर RNOR.
सर गेटिंग क्लैरिटी? सर RNOR एक स्पेशल स्टेटस है यार, वो रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है. तो एक्ट क्या बोल रहा है बेटा? दिस गाय इज एन RNOR, इज ए पेक्यूलियर गाय. इफ इज ROR, कैच हिम फॉर एवरीथिंग. इफ इज NR, कैच हिम ओनली फॉर इंडियन इनकम. दिस RNOR इज ए पेक्यूलियर फेलो. ना पूरा का पूरा रेजिडेंट है ना नॉन रेजिडेंट है, तो बीच में खड़ा है वो. इंडियन इनकम तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी हम लोग, फॉरेन इनकम पकड़ेंगे सिर्फ दो ही केस में. क्या है दो केसेस? वापस बोलो दो केसेस बेटा. बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल्ड wholly or partly from India. Professional income which is set up in India. Set up in India means what? Having an office in India. So getting clarity on this point? So for example, my dear friends, now I'll ask you one question. Think properly and tell me the answer now. Okay? I think yesterday I stopped at 2 examples only, no? After that I didn't make you write anything, no? ठीक है, सुनो अभी एक और एक एग्जाम्पल सुनेंगे, सुनो ध्यान से प्लीज. सर let's say for example there is some business in Uganda. नहीं हो सकता क्या युगांडा में? हाँ नाम सुने ना. हाँ, there is a business in Uganda which is owned by Shiva Teja. Example, आप ये मत बोलो शिवा सर का युगांडा में बिजनेस है. हाँ, शिवा तेजा. एंड आई एम कंट्रोलिंग. Shiva Teja basically stays in India and also in UK. Half of my time I spend in India, half of my time I spend in UK. Example. Okay? Yeah. So getting my point, everybody? Now, this business is 60% controlled from India. समझ रहे आप मेरी बात? And 40% is controlled from where, sir? UK. Wonderful. So 60% I'm controlling from India, 40% I'm controlling from UK. And where is the business, my dear friends? Uganda. Business in Uganda. Uganda तो इंडिया में तो है नहीं, वो तो क्लियर है आपको बेटा. Where is Kenya? हाँ, आउटसाइड इंडिया. इतना बोलो, आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया, वो तो बोलो. क्लियर है ना यार? हाँ, सिक्किम. वंडरफुल. एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था. One person got business income, one place called Gangtok. Spelling is Gangtok, but it's not pronounced as Gangtok. It's pronounced as Gangtok. Clear, my dear friends? We don't pronounce as Gangtok, we call it as Gangtok. Clear, my dear friends? Student wrote, since Gangtok is outside India, it is regarded as a foreign income. अरे भैया वो सिक्किम का कैपिटल है, वो सिक्किम का कैपिटल है. स्टूडेंट बोल रहा नहीं मालूम तो गया. टेल मी, इज इट टैक्सेबल? कैसा आप बोलेंगे यार? आप यस, अब वापस बोलेंगे सर हमको पता है कि आप ROR है. मैं बोला क्या मैं ROR हूं? तो फिर NR हो तो तो फिर अरे यार पहला नहीं, लेट मी कंप्लीट. इज दिस फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम? अरे बोथ कैसा हुआ यार? 100% इज अ फॉरेन इनकम. अरे 60-40 तो कंट्रोल्ड है. सी, to decide whether it is a foreign income, Indian income, we look at only 2 parameters. Accrued where, received where. It will accrue at a place where activity is done. Where is the business done? So accrued where? Uganda. पैसे क्या आया किधर? Uganda. So what kind of income? Control यहाँ से तो क्या हुआ? फिर भी foreign income बनेगा ना? So getting my point, everybody? So speak out. I'll give a small example so that you'll get a more clarity. Okay? I'm sitting in Pune. Let's say I take an online class for Hyderabad students. Okay? Income is accruing where? Hyderabad. I actually receive the money only after going to Hyderabad. Accrued where? Hyderabad. Received where? Hyderabad. Just because I took class from Pune, will you say it's accrued in Pune? You're getting my point, everybody? So its control is not the important parameter. Where the income is generating, that is important. Accrued. Accrued means what? Where it has arisen. You're getting my point, everybody? All of us. चलो, it's what kind of income this is? Foreign income. तो आप सीधा कैसा बोल सकते हैं आप टैक्सेबल है? शिवा तेजा NR भी हो सकता है ना? हाँ, तो फिर पूरा पूछो ना यार, फिर क्या है आप? क्या है आप? मैं बोलता हूँ ना सर, रुको. Come on. शिवा तेजा is ROR. क्या होगा बेटा? हाँ? Wonderful. RNOR. क्यों?
because this is business income, profession nahi hai, business income which is controlled wholly or partly from India. समझ में आ रहा है सर? चलो, NR not taxable. So getting clarity? It is properly very important whether to classify it is a Indian income or foreign income. If the classification goes wrong, पूरा का पूरा गया. अगर by mistake आप इसको Indian income बोल दिए, आप सीधा बोलेंगे सबको taxable. To check whether Indian income or foreign income, we look at two important parameters. Parameter number 1, accrued. Parameter number 2, received. If anyone is in India, we call it Indian income. But if accrued and received both outside India, we'll call it as what income? Foreign income. So getting clarity everybody? Speak out. Now I'll ask you next question. Question number 1 ho gaya. That is, we discussed that ROR case taxable, RNOR case taxable, NR case not taxable. Now my next question to you is, how much is taxable? एग्जाम में आता है, बहुत बार आया भी है. मैडम क्वेश्चन समझ में आया है आपको? हाँ, क्या पूछा मैंने? हाँ, टैक्स कितना लगेगा, नहीं किस पे लगेगा? ऑप्शन ए 1 crore, ऑप्शन बी 60 lakhs, ऑप्शन सी 40 lakhs, ऑप्शन डी नन ऑफ देबो. एनी ऑफ देबो नहीं है बेटा. आप वो एनी ऑफ देबो बोले तो आप वही ऑप्शन चूज करेंगे, पता है मुझे. बोलो बेटा, स्पीक आउट. आंसर इज 1 crore. There is nothing called partly controlled from India, tax only that part. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनकम टैक्स में. That is partly controlled, tax only that part. If they do like this, if they put this concept in the law, what people will start doing, they'll control only 10% from India, 90% they'll control from foreign. हो गया ना यार? अरे हम इंडियन से यार, हमको कुछ ऐसा बोलते ही मत करो तो हम निकालते जुगाड़. हम हैं जुगाड़ू लोग, करेक्ट ना यार? If they say that we'll tax only how much is controlled from India, we will say everything is controlled from foreign only. We'll sit in India and use foreign IP address. अरे टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया यार. Sit in India, use foreign IP address, start accessing everything. एक बंदा है जिसके बारे में मैं कल बोलूंगा, ठीक है? आज उसका ग्लिम्स तो बोलता हूं मैं. Heard of a website called Alibaba? Chinese website. That person makes lot of money in India. Lot of money from India. Wrong statement. Lot of money from India, not lot of money in India. Lot of money from India. But that man is enjoying a lot without paying any taxes in India. But they brought some amendments in the law recently. Now why he is enjoying without paying the tax? I'll tell you why. Reason number 1, he is a non-resident. Company incorporated in China. Correct my dear friends? उसका इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, इंडिया में कोई बंदा नहीं है, सिर्फ वेबसाइट से बिजनेस चलता है. दैट वेबसाइट इज ऑन चाइनीज एयर स्पेस. फ्रॉम चाइनीज एयर स्पेस सिग्नल्स आर कमिंग इनटू इंडिया एंड यूजिंग दैट सिग्नल्स वी आर एक्सेसिंग दैट alibaba.com. समझ रहे हैं आप? अब ये मत बोलो सर अमेजोन भी यूज कर रहे ना. अरे अमेजोन को इंडिया में वेयर हाउस है, अमेजोन बंदा टैक्स पे कर रहा है इंडिया में. अमेजोन यूएस पे नहीं कर रहा होंगे. Amazon.in is paying tax in India. .com is not paying. You're getting my point, everybody? Speak out. So we'll talk all the special aspects in detail. कल आपको एक वर्ड बोला था, याद है? Deemed to accrue or arise in India. In that we have got all the special points. When do you say it is deemed to accrue or arise in India? It's a beautiful concept. You'll enjoy a lot. But that stage we'll go after we complete some special points. Clear है बेटा सबको? Everybody? तो यहाँ पे कितना टैक्स लगेगा? किस पे टैक्स लगेगा? Sorry. 1 crore, entire amount is taxable. I mean, don't write 1 crore and all. Your brain should tell that it is not that part controlled, part taxable, even though part controlled, full taxable. Because RNOR, 2 cases it is taxable. Number 1, business income which is controlled wholly or partly from India. अगर wholly partly India से control हो रहा है तो taxable है. अगर taxable है तो पूरा taxable है. Number 2, professional income which is set up in India. Set up in India means having an office in India, fixed place of profession in India. So getting my point, everybody? सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? 100%. ये भी एग्जाम्पल ले लो बेटा. एग्जाम्पल नंबर 3. कल फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? रेंटल इनकम दिया था मैं, बराबर ना? राइट. जल्दी निकालो. We came late, then slowly we'll pick up the books.
Then we'll drink some water. We'll say hi to our friends. तब तक एक कॉन्सेप्ट गया. फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो एक लंबा सा स्माइल आएगा. नहीं लिखो चलो फटाफट. Sorry. चलो हो गया बेटा. Guys, come on guys, tell me what is the first condition to become a resident? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Are we clear with this point, everybody? And my dear friends, we discussed very clearly that if a person is ROR, his tax treatment is different, RNOR tax treatment is different, NR tax treatment is different. So we are going to solve questions where we are going to ascertain whether he is ROR, RNOR and NR, and then find out which income is taxable. You're getting my point, everybody? Are we ready to learn the special cases? Right, let's start. Let's listen, just 5 minutes, don't write anything, just relax and listen, concentrate, okay? How many basic conditions are there, sir? We have got 2 basic conditions. What is number 1? He must be in India for a period of 182 days or more. Or condition number 2, 60 days or more in previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Till this point, we know the concept, everybody? Everybody? Now, carefully listen, don't write anything, just sit and relax and listen. 3 special cases I'll tell. How many special cases I'm talking, sir? 3 special cases. Case number 1.
Indian citizen. Every word I'm writing is very important. What citizen, sir? Who is an Indian citizen? No, need not say that. Who is born in India and having a valid identity proof in India. But we'll not take Aadhaar into account because we discussed yesterday that Aadhaar is a proof of identity, but not a proof of citizenship. Correct, my dear friends? Wonderful. Yeah, so what is the first special case? Indian citizen leaving India. वो छोड़ के जा रहा है. नहीं परमानेंटली नहीं, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है. इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ employment outside India. Indian citizen who is leaving India for the purpose of what, sir? Employment outside India. It's not necessary that that fellow is unemployed in India and going for a job in India. It is also possible that he is having a job in India but going to foreign for a better job. That is also possible, no? Is it mandatory that unemployed fellow only should go to foreign? Correct, my dear friend? So one of my friend is there who works in Microsoft Hyderabad, Microsoft India office. He recently got an offer from Microsoft US. 2 days back, he called me and asked, when should I go? They're calling me immediately. I told him, ensure that you get out before 30th September. You'll ask me why. See now, Indian citizen living outside India for the purpose of employment outside India. He is regarded as a resident. He is regarded as what, sir? Only if first basic condition is satisfied. समझ रहे आप मेरी बात? दोस्तों बोलो, first basic condition क्या है? He must be in India for a period of what? 182 days or more during the previous year. Actually, sir, we have got two conditions. Any of the condition you satisfy, you will become resident. Both you satisfy, still you become resident. But what I'm trying to say is that we have got some special cases in that basic conditions only. Additional तो same ही है यार, additional दो condition same ही है. बाद में रिवाइज करते वापस उसको. क्लियर है ना सर? सर एडिशनल का स्टोरी तब आएगा, पहले ये बंदा रेजिडेंट बने तो ना. एडिशनल का स्टोरी तभी आएगा ना, आर तो पहले भैया हो तो बाद में देखेंगे, पहले इसको रेजिडेंट तो बनने दो. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? तो रेजिडेंट बनने का कितना कंडीशन है? 2 कंडीशन है. बट इन फर्स्ट स्पेशल केस 3 केसेस विल टॉक. इन फर्स्ट स्पेशल केस ही विल बिकम रेजिडेंट ओनली इफ ही सैटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? 182 days or more during the previous year. आप समझ रहे हैं? That's why when my friend told I got a job in Microsoft US, I told him to get out before 30th September. Because if he goes before September, he will definitely stay in India for less than 182 days. What happened? What difference it makes, you are asking? What will become? Non-resident. Whatever part of 6 months he worked in India, whatever salary he made in India, that he will pay tax. If he would have been India or foreign, India income to taxable hai na kaise bhi, that he will definitely pay tax. But after going to foreign, he will make money in foreign, no? That he will not pay tax in India. You're getting my point? So I told you very clearly, before September 30th, you pack it off. And वो बंदे का टिकट भी बुक कर चुका already वो. 27th of September is walking out. 27th or 26th, someday is going. You're getting my point, everybody? Speak out. अरे यार उतना कैलकुलेट क्या कर रहे हैं यार? साल में 365 days है. नहीं तो कुछ कैलकुलेटर निकाला तो डाउट आया. निकाल के रखा है, ठीक है बस. सर लॉजिक है ना यार, 365 days है. So September, half of the year is 182 days. You got the point. That's why I told him. I did not apply my brain also. I told him before September, please get out. कैसे भी जा रहा है? वो बोल रहा है अक्टूबर में जाऊंगा भाई. अरे कहीं को जाना है भाई अक्टूबर में? You go before, you will save few lakhs. You will save some taxes. Go, walk out. You're anyways going. So why to go in October? Go in September. You'll at least become a non-resident. उसको समझाने के 10 मिनट लगा मुझे. वो पूछ रहा है अरे यार राहुल नॉन रेजिडेंट मतलब क्या होता है? वो उसका बैकग्राउंड मतलब. He is my school friend. He has done his BTech, software side, got a job in Microsoft. Now I'm going to Microsoft US. वो टेक्निकल बंदा है पूरा का पूरा, मतलब सॉफ्टवेयर कोडिंग कैसा करो पूछे तो हम जीरो है, वो हीरो है. अब टैक्स पूछे तो उसको तो कुछ मालूम नहीं. 10 मिनट समझाना पड़ा फोन पे मुझे. रेजिडेंट होता है, 182 days होता है, ऐसा होता है, ऐसा कैलकुलेट करते. सब सुनने के बाद एक ही डायलॉग बोला, ये क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है यार? What do you think is my reaction?
अगर वो बंदा मुझे इतना ही पूछा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मेरा रिएक्शन क्या है गेस करो? नहीं, पॉपुलेशन से कुछ नहीं बोला मैंने, उसको तो एक ही लाइन बोला, अगर कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं तो मुझे फोन करता ही नहीं ना। अरे बराबर ना यार, लेट्स फील हैप्पी दैट टैक्स इज लाइक दिस। इफ इट इज सो सिंपल एवरी फेलो विल डू ऑन हिज ओन, नो व्हाई डज ही वांट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? अपना वैल्यू तभी है जब कॉम्प्लिकेटेड है, व्हेन इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड अपना valuation is more, no? See, when we talk more about tax, why do we feel more good about it? The reason because the more complicated it is, the more wonderful it is. We should feel happy about it. Take positively. Don't take it negatively at all. Tax should be positive always for us. Clear है बेटा? चलो फर्स्ट केस क्या है? और ये मस्ट बी इन इंडिया क्या है? मतलब ये फर्स्ट केस क्या है? स्पेशल केस फर्स्ट वाला, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। समझ में आ रहा है सबको? बोलो क्या है फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट स्पेशल केस? इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। गेटिंग क्लैरिटी? वो कब रेजिडेंट बनेगा? ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। गेटिंग क्लैरिटी? स्पीक आउट एवरीबडी। And let me honestly tell you, whenever you solve any question, in the question say, if he is leaving India, he must leave during previous year. Previous year में जा रहा है वो, बराबर ना? वो important है ना? Indian citizen leaving India during previous year for the purpose of what? Employment outside India. And whenever they give a question in the exam, first to see the point. I mean, जब हम सॉल्व भी करेंगे वही करेंगे, फर्स्ट विल चेक वेदर दैट फेलो इज इंडियन सिटीजन और नॉट, एंड यू नीड नॉट अप्लाई योर ब्रेन. दे विल नॉट टेल यू बॉर्न इन इंडिया, हैविंग आधार इन इंडिया, वोटर आईडी इन इंडिया, पासपोर्ट इन इंडिया, वो सब टाइम पास आपके साथ करेंगे नहीं. क्वेश्चन ओनली विल टेल वेदर इज इंडियन सिटीजन और नॉट. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, we'll assume he is not an Indian citizen. Unless question says, don't assume he is an Indian citizen. Question बोलेगा, हर बार क्वेश्चन में बताते वो लोग इंडियन सिटीजन है. नहीं बोले तो अज्यूम ये मत करो कि हम अज्यूम कर रहे वो हमारा आदमी है, कैसा करेंगे अज्यूम. यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो क्वेश्चन विल टेल यू वेदर ही इज एन इंडियन सिटीजन और नॉट. आर वी क्लियर? हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस आर देयर? 182 days or more during the previous year. Second, 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Actually मेरा दोस्त जो अभी जा रहा है सितंबर में, that fellow will actually satisfy second basic condition. He will satisfy, but still he'll become non-resident because it is covered in special case. समझ रहे आप मेरी बात? स्पेशल केस वाला फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ employment outside India. He is regarded as a resident only if what? First basic condition is satisfied. Second special case also will complete. Then we'll take a small break for third special case. मतलब ये दो पॉइंट्स लिखते हैं फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं. क्लियर है सर? लिसन. सेकंड केस, इंडियन सिटीजन. स्टूडेंट बोल रहा है हाँ सर, कैच पॉइंट. फर्स्ट स्पेशल पॉइंट में भी इंडियन सिटीजन है, सेकंड स्पेशल पॉइंट में भी इंडियन सिटीजन है. Indian citizen leaving India during previous year. Indian citizen leaving India during previous year as a member of crew. So crew का वर्ड सुने? वंडरफुल. crew of foreign bound ship. Foreign bound ship is that ship which is going from India to foreign and for foreign to India. समझ रहे आप? Even in that case also they told he is a resident only if first basic condition is satisfied. समझ गए सर आप मेरी बात? चलो बेटा, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? फर्स्ट वाला पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट दोनों भी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, बट फर्स्ट केस इज व्हाट? फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. सेकंड केस इज व्हाट? क्रू ऑफ ए फॉरेन बाउंड शिप. क्रू इज समबडी हु इज वर्किंग इन दैट शिप. क्रू इज समबडी हु इज वर्किंग इन दैट
ship. Are we getting clarity? So for them, we'll apply what condition? 182 days. We don't apply the condition of 60 days and 365 days. Are we understanding, everybody? Speak out. But some special point, which is a big challenge, I'll explain you practically what is the issue here and why that concept has come. Okay? But whatever is relevant for you, that only we'll write. Okay, just listen. Sir, ठीक है, समझ गए ना आप लोग? हाँ ठीक है सर, क्या बोलेंगे सर? टेरिटोरियल, is that part of India? Correct? No? Is that a part of India? Yes. Now let's say there is one person, Mr. A. ठीक है बेटा, assume that is a deemed to be ship. सर क्लियर है सर? स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम आज समझ गए आप साइंस छोड़ के कॉमर्स में क्यों आए. एनीवेज जस्ट जोकिंग, बट कुछ नहीं कर सकते ऐसे ये ड्राइंग. चलो देखो ना, द पॉइंट, आई मीन जोक से पार्ट, सी द कॉन्सेप्ट. मिस्टर ए got into the ship as a crew member. Sir, see, directly I can tell the concept, but the point is, if you understand the logic behind that, it will be more easy for you. Clear? He got into the ship as what, sir? Crew member. Sir, ship को थोड़ा टाइम लगेगा सर इंडिया क्रॉस करने के लिए. अरे बोलो यार, शिप तो पानी में ही है. अरे बोलो यार, फिश है. अरे सन नहीं है भैया, ऑक्टोपस है वो. हाँ वो जो भी है यार, जोक से बात. चलो get the concept. I mean I want you to remember the story. That's the whole point. Sir, when this person got into that vessel or the ship, you tell me directly वो 12 nautical mile immediately cross करेगा क्या? It takes some time for the vessel to cross the 12 nautical miles. Till the time vessel does not cross 12 nautical miles, we say that he is in India. Speak out. Everybody. दोस्त बोलना, जब तक 12 nautical mile क्रॉस नहीं करेंगे तब तक तो इंडिया में ही है ना, my dear friend. Clear? All right. So till the time the vessel does not cross 12 nautical mile, the ship is still said to be in India. So this gentleman is in India. Now the point to be noted here is, how do we track? See, for example, one gentleman entered into the ship on 10th of August. The vessel is slowly going. On 13th August, it crossed 12 nautical miles. Will you say that till 13th is in India? ओ बॉर्डर पे क्या कुछ झंडा लगा के जाएंगे क्या? पानी है. यू गेटिंग माई पॉइंट? नो, वी आर इन द ओशन. हाउ डू यू डीमार्क दैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस डे यू क्रॉस दैट लाइन? यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू नो. आप ये नहीं बोल सकते कि हम ट्रैक करेंगे कि कब निकल रहे यहां से, क्या टाइम पे हमने ये लाइन क्रॉस किया. हम रिकॉर्ड करके उसका फोटो लेके बताएंगे उसको. दैट इज इनसेंसिबल. You're getting my point, no? Because you have to consider the holistic way that India population is so high. We want a generic answer. It cannot be a specific answer. Correct? So what they told is, they introduced a wonderful concept that every person who's working on that ship will be given something called one certificate known as continuous discharge certificate. What do we call it, sir? Continuous discharge certificate. CDC they call it. Every person who's working on that ship will get that certificate called CDC. It's something like an ID card. Something like an ID card. Getting my point? Continuous discharge certificate. Correct? Now, why they say continuous? Because एक बार वो वेसल में आया, जब तक वापस नहीं आया तब तक तो रिटर्न नहीं आ सकता ना यार. उस पर बैठा रहेगा ना उसको. Correct, my dear friends? It's not an aircraft for you to tell that next 1 hour flight journey is there, then I'll get down to other flight. That's not, option is not there like that there. You're getting my point? क्या है CDC का फुल फॉर्म? Continuous discharge certificate. Correct, my dear friends? They told we will take this certificate as your basis. They take certificate as your basis. And date of joining. Date of what, sir?
joining till the date of signing off. What is signing off? Tata bye bye. Correct, Nair? Date of joining till the date of signing off shall be excluded for calculation of number of days in India. You're getting my point? We don't want to physically track when did you cross territorial waters. So what we are trying to say, the date when you joined the ship and the date when you have left that ship, that period we will treat as if you are not in India, even though that ship could be roaming in territorial waters for 1-2 days. कभी ना कभी तो बाहर जाएगा ना, because it's a foreign bound ship. If it's a only Indian bound ship, then this concept I did not discuss also. अरे जब इंडिया में ही घूम रहे हैं तो छोड़ के कहाँ जा रहे हैं यार वो? If a person is going only from, let's say, Bombay to Goa, or is going from all the way from Maharashtra to Visakhapatnam, from this side to that side, you're getting my point? Then what difference it makes? Okay, ऐसे भी पूरा इंडिया में ही है. Friends, getting my point? We are talking about this concept only because it is a what ship? Foreign bound ship. इंडिया से फॉरेन जाएगा वो. या तो वो इंडियन शिप हो सकता है या तो फॉरेन शिप हो सकता है. What kind of ship is not my question. Where is it going is my question. Where is it going? Foreign bound ship. Foreign bound ship. It's a foreign destined ship. You're getting my point? And since it is not practically possible to track when it crossed territorial waters, उन्होंने क्या बोल दिया बेटा? Date of joining the ship till the date of signing of the ship. We will treat as if the person is not in. हो गया ना खत्म कहानी? Very, very simple. They made it more comfortable now. Because how do we track? How do we track when it crossed territorial waters? It's practically impossible. Clear है sir? आपकी बुक में एक ही लाइन दी है. Date of joining till date of signing off shall be excluded for calculation of number of days in India. पर क्यों? उसके पीछे लॉजिक ये है. And this all story they have given by Rule 126 of Income Tax Rules. Knowledge के लिए बोल रहा हूँ. Clear no? In rule they told that date of joining, date of signing off exclude कर दो. Rule ने ये नहीं बताया कि ये reason है करके. Reason we have to evaluate. Are you getting my point, everybody? Special cases are not yet done. चलो बेटा, कितने basic conditions है? 2. What are first basic condition? Come on. He must be in India for a period of, पूरा बोलो यार, सब साथ में बोलो, come on. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Correct, my dear friends? I discussed one example yesterday that Mr. David Warner is coming to India every year for 100 days. How many days? Will he become resident? Yes. By satisfying second basic condition. Correct, my dear friends? But we are talking about some special cases where only first condition is applicable. What is the first case? Indian citizen leaving India during previous year for the purpose of employment outside India. समझ गए आप लोग? Second वाला point क्या है बेटा? Indian citizen leaving India during previous year as a member of a crew of a foreign bound ship. समझ गए? Everybody? चलो put side heading. Ship. There is an act called Merchant Shipping Act. As per that act, that ship owner has to issue that certificate. That they'll take it as documentary evidence. सर्टिफिकेट मैनेज करेंगे बोल रहे क्या? अरे अब ये समझो कि 182 डेज सेटिस्फाई करेगा तभी रेजिडेंट बनेगा ना. वो बंदा क्यों देगा? जो शिपिंग का ओनर है, व्हाई विल दैट फेलो गिव अ फेक सर्टिफिकेट? वो क्यों रिस्क में डालेगा? एम्प्लॉय के लिए वो खुद रिस्क में झुके क्यों जाएगा? पकड़ा गया तो उसको भी तो लगेगी ना. यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. और शिप भी शिप इंडियन हो सकता है ना, प्रॉब्लम नहीं है. सर इंडियन इनकम में तो कुछ भी हो टैक्सेबल हो जाता. ROR, RNOR, NR से कोई लेना देना है नहीं यार अपने को. Once an income is Indian income, it is taxable for all. It doesn't matter whether you ROR, RNOR, NR. Correct?
Yes, my dear friends. बेटा बोलो. चलो चालू कर दे. Put side heading. Special cases where. हाँ हाँ हाँ. अभी वो थर्ड वाला स्पेशल केस है, पढ़ेंगे हम लोग, जो पढ़ने वाले बाकी है अभी. फुल फ्यूचरिस्टिक है आप. चलो. Put side heading. Special cases where. Special cases where only. Special cases where only first basic condition is applicable. Special cases where only first basic condition is applicable in order to become resident. In order to become resident. Clear है बेटा? चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट. इंडियन सिटीजन, Indian citizen leaving India Indian citizen leaving India during the previous year. Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of. Indian citizen leaving India during the previous year. Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of क्या बेटा? Employment outside India. Number 2, Indian citizen Indian citizen leaving India. Indian citizen leaving India during previous year. Indian citizen leaving India. Excuse me. Indian citizen leaving India during previous year as a member of crew of. Indian citizen leaving India during previous year as a member of crew of. As a member of crew CREW, crew of foreign bound ship. Foreign bound ship. Underline that word, bound ship. Note. Write your notes. Simple way, let's write. In order to compute in order to compute in order to compute the period of stay in India, in order to compute the period of stay into India, in order to compute the period of stay in India,
In order to compute the period of stay in India, come on, the following period is excluded. The following period is excluded. The following period is what, sir? Excluded. Following period is excluded. नीचे लिखो. The date entered into. The date entered into. The date entered into. The date entered into the continuous discharge certificate. The date entered into. The date entered into the continuous discharge certificate. The date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship. In respect of what, sir? Joining the ship. And the date entered into. The date entered into. The date entered into the continuous discharge certificate. The date entered into the continuous discharge certificate in respect of. In respect of what, sir? In respect of signing off. In respect of signing off. So clear with this point, everybody? Beta bolo. So what is the simple way? I mean, for writing all that we wrote story, but simple way, what is the answer? Date of joining to the date of signing off shall be excluded. How do they check that joining, signing off date? Using the certificate called continuous discharge certificate. And all this story will come only in case of foreign bound ship. If that is only Indian rotating ship, there is no question at all then. Because logic you have to apply there. So getting clarity? Because he's leaving India. Point starting line only says what? He is leaving India. Correct, my dear friends? Beta bolo. Indian citizen who lives India during previous year. Indian citizen who lives India during previous year. You're getting my point? Chalo, what are the 2 points we have done? Indian citizen who is leaving India during the previous year for the purpose of what? Employment outside India. Next point. Indian citizen leaving India as a member of crew of what ship? Foreign bound ship. Exactly. So in your material, open page number 40 once. If you have your material. If you're not yet having, then I'll also open here. Can we see that? Yes? 40. Yeah, see now. Mr. Anand, chalo beta dhyan do. Mr. Anand is what, sir? Indian citizen. And a member of crew of what? Singapore bound Indian ship. That ship could be Indian ship or foreign ship, doesn't matter for me. But it's going out of India. You're getting my points? So it's getting my point, everybody? Yeah, is a member of crew of Singapore bound Indian ship. That means foreign bound Indian ship. Clear? Right. Engaged in carriage of what? Passengers in international traffic departing from Chennai port on which date, sir? 6th June 22. 6th June 22. From the following details for the previous year 22-23, determine residential status of Anand for 23-24, assuming that he stay in India in the last 4 previous years. Is how many days?
400 days. ये तो बिस्किट है अपने को. Is that 400 days relevant for us? क्यों? Because this fellow is an Indian citizen who is leaving India as member of crew of a foreign bound ship. We are not concerned about second basic condition. We are concerned only about first basic condition. बराबर सर? तो प्रीवियस ईयर से पहले वो क्या किया, अपने को कुछ लेना देना है क्या? Are we concerned about it? No. We are concerned only about first condition. What is the first condition? 182 days or more during the previous year. Let's see. Like this, they'll give in the question. Date entered into so and so in respect of joining. Date entered into so and so in respect of signing off. When did he join? When did he leave? This period we will treat as if he is outside India. Please calculate the days. Including. इंक्लूड करना पड़ेगा. When it is 6 आ रहा है क्या? Come on, see the answer. In this case, Anand is an Indian citizen who is leaving India during 22-23 as a member of what? Crew of a Indian ship. He would be resident in India if he stayed in India only for how many days? 182 days or more. It's correct, my dear friends. And the voyage or journey is taken by an Indian ship engaged in the carriage of passenger in international traffic originating from port in India, that is Chennai port, and is going where? Outside India. So voyage is what voyage? Eligible voyage. Then only we call it as a foreign bound ship. If it's going from India to India, do we call it as a foreign bound ship? Therefore, the period beginning from 6th June 22, ending on 9th December 22, being the dates entered into CDC in respect of joining and signing off by Anand, who is a member of crew of the ship, has to be excluded for computing period of stay in India. What is that period? 187 क्यों आया इसको फिर? 6th आप include नहीं करेगा? You have excluded 6th. You have to include that 6th in these special cases only. Clear, my dear friends? Normally day of coming, day of going is included, but these cases that period is excluded completely. Sir, general point yesterday what we wrote, that holds good. What is the general point? Day of coming, day of going is always included. That is the general point always. But in this vessel case where date of joining till signing off we are doing, both has to be included. Last में 9th भी include करेंगे. 9th भी include किया ना? So getting my points? So 25 days in June. June में कितना है? 30 days ना? 6th include कर रहा है, बराबर है ना? So getting my point, everybody? 25, 31, 31, 30, 31, 39. Perfect. 187 days. पूरा 3 में से 185 माइनस करिए तो कितना होगा बेटा? 178. Will he be resident? क्या होगा? He becomes a non-resident. And once he is non-resident, what will happen? We will tax only Indian income. We will not touch him for foreign income. So समझ में आ रहा है सर? So speak out. I repeat once again. General thumb rule always is that day of coming, day of going is always included. But we are talking about special case where person is leaving India as a crew of a foreign bound ship. In that law only told date of joining till the date of signing off is excluded for calculating number of days in India. In that case, you have to add everything. That side, this side, both. And then reduce it from total. You're getting my points? Everybody? This question is from here. Illustration 1. I hope we are clear with this point, everybody. Speak out. I covered all your past exam questions and ICA questions, everything we covered. Don't worry. Friends, make sense? पूरा खत्म नहीं हुआ स्पेशल केस अभी तक. पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त. But yesterday I've given a complete framework of what this chapter is all about and why we are trying to learn this chapter. Because this chapter only clearly says us whether some income is taxable or not taxable. You're getting my point, everybody? All of us? Yes, my dear friends. Chalo, how many basic conditions are there normally?
2. What is the first one? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. But in some special cases, we apply only first condition. What are 2 special cases we learned? Indian citizen during, pura bolo yaar, Indian citizen leaving India during previous year for the purpose of employment outside India. Then Indian citizen leaving India, foreign bound ship. It could be Indian ship, but it should be a foreign bound ship. You're getting my point, everybody? All of us? Chalo, any other example in this? That's it. Chalo. Are we clear with this point, everybody? So what are 2 special cases, sir? First one, Indian citizen leaving India during previous year for the purpose of employment outside India. Second special case, kya hai beta? Indian citizen leaving India during previous year as member of crew of an Indian ship, which is a foreign bound. Sir, clear? Everybody? वो Indian ship में ही जा रहा है, but that ship is a foreign bound. So ultimately बाहर जाना है यार. That is the only point. You're getting my point, everybody? Speak out. That's where in actually Bare Act, if you see, they use the language called Indian citizen leaving India as member of crew of an Indian ship. And below they wrote, Indian ship is that ship, which Indian ship in this case means foreign bound ship. That means it's an Indian ship which is going to foreign. Meaning समझ गए ना? अब एग्जाम में जाके Indian ship, foreign bound ship, foreign Indian bound ship, कुछ तो मत लिखो. You're getting my point? It's Indian ship, but it is going to foreign. Are we clear? Everybody? All of us? Chalo beta. It's finally last special case with which we can complete the basic story of your special cases. Clear? Are we ready? चलो सुनो, ध्यान से सुनो, ये थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है, so please listen carefully here. Third special case, Indian citizen or a person of Indian origin. चलो बेटा क्या लिखे हम लोग? Indian citizen or a person of Indian origin. So what is that line? Indian citizen or a person of Indian origin. Now who is an Indian citizen? Who is born in India and having a valid ID proof in India. Now what is the other word? Person of Indian. Who is a person of Indian origin? Your parents are Indians. How do you know your parents are Indians? Sorry? They have valid identity proof in India. वो तो citizen बन गए. ये तो person of Indian origin है. They have clearly defined in the law who is a person of Indian origin. They define. Person of Indian origin means either he or any of his parents, either he or any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. Undivided India means before 1947. So India was together, no? We were together with Pakistan and other multiple countries. India was only one nation before 1947. Correct, my dear friends? So let me honestly tell you, Shiva Teja is a person of Indian origin because my grandfather is born before 1947. Your case, I don't know. Sir, आप ये मत बोलो grandfather मतलब great grandfather नहीं. If you see great grandfather, definitely they'll be before independence only. They covered only till parents, grandparents. That's it. Your grandparent may not be born before 1947. Please check. Before 1947 only, then you are also a person of Indian origin. No? Not an Indian origin then. Don't worry, you are Indian citizen. So getting my point, everybody? And grandparents cover both maternal and paternal. समझ गए बात? Grandparents cover what? Both maternal and paternal.
क्या है मतलब? पेट्रोल मतलब पापा, मेट्रोल मतलब मम्मी, नाना नानी, दादा दादी, हो गया ना बात? अरे यार उनको क्यों छोड़ेंगे यार, वो भी तो इंपॉर्टेंट है यार. नानी माँ को कैसे छोड़ सकते हैं यार? चलो, गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? मैडम क्लियर है? गुड मॉर्निंग. या कम ऑन. हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस आर देयर? 182 days or more during previous year, or 60 days or more during previous year, and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. स्पेशल केस कितना हो गया बेटा? स्पीक आउट. सर अभी तक मैं आज सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पढ़ा चुका आपको, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया. आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम बिकॉज स्पेशल केसेस विल टेक सम टाइम. आर वी क्लियर? लिसन नाउ. इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन origin who comes to India, for a visit during previous year. पढ़ो क्या लिखे? Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. So getting my point? First वाला केस क्या था? Going. Second वाला केस क्या था? Going. Third वाला केस क्या है बेटा? Coming to India for a visit during previous year. Now some special point I will tell. Don't read anything. Just relax and listen. I'll explain to you my responsibility. First you will get confused. Next you will get convinced. वो मेरा responsibility है. तो सुनो ध्यान से. In this there are 2 cases. Generally, resident only if first basic condition is satisfied. मतलब क्या है बेटा first basic condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. अगर वो satisfy किया तो resident है, नहीं तो non resident बन जाएगा ये. बराबर है सर? Other side, special case. If total income other than income from foreign sources, total income other than income from क्या बेटा? Foreign sources is greater than 15 lakhs. Greater than what sir? 15 lakhs. He is regarded as resident if he satisfies second modified basic condition. Second modified basic condition. Now what is this word called? Second modified basic condition. Second वाला condition क्या है बेटा actually? 60 days or more during previous year and 365 days or more during 4 years preceding the relevant previous year. Greater than or equal to 120 days and greater than or equal to 365 days. Now I'll explain to you. Listen very clearly. Please carefully concentrate. Now, in general, there are 2 basic conditions. If anyone you satisfy, you will call you resident. बेटा सुनो सब लोग ध्यान से सुनो. Everybody please concentrate. There are 2 basic conditions. Any condition you satisfy, we'll call him resident. Both satisfied, we'll call him resident. And the 2 conditions are, he must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Correct, my dear friends? But there are 3 special cases what we are talking. Special case number 1, Indian citizen leaving India for the purpose of employment outside India. This fellow will become resident only when the first condition is satisfied. Second case, Indian citizen leaving India as a member of crew of an Indian ship which is foreign bound. Speak out. Then also he will become resident only if the first basic condition is satisfied. Third case is Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India. ये जा रहा नहीं बेटा, ये इंडिया को आ रहा है. Who comes to India for a visit during previous year. This fellow will become resident only if the first basic condition is satisfied. However, if this fellow's total income is more than
15 lakhs other than income from foreign source. मतलब इंडियन इनकम 15 लाख के ऊपर है भाई, समझ रहे हैं आप? इंडिया में 15 लाख के ऊपर इनकम है इसको, भैया 182 डेज तो कैसे भी सेटिस्फाई नहीं किया, बराबर? अगर 182 सेटिस्फाई किया तो स्पेशल वाला कॉन्सेप्ट केस ही नहीं आता नहीं ना यार, ब्रेक आउट यार. Special वाला केस कब आएगा? When he is not satisfied 182. Then what we are trying to say, since your income is more than 15 lakhs, we will still call you resident even though you didn't satisfy 182. If you satisfy 120 days or more during previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year, so 60 is going to become 120. समझ रहे आप मेरी बात? Speak out here, all of us, everybody. Now again I'll repeat, listen very clearly, please carefully, कुछ भी लिखना मत, सुनो पहले ध्यान से, सुनो सब लोग, everybody concentrate. IC or PIO, Indian citizen or a person of Indian origin. This man is coming to India for what purpose? Visit. Sir, yes or no? First case, he is satisfied. Let me write like this. No phones, please. Yeah. This gentleman, he is satisfied. First basic condition. क्या बोलेंगे बेटा इसको? Resident. हो गया ना यार? बोलो. Speak out. Now listen. First condition, not satisfied. First condition, not satisfied. Then special case may apply. I'm not telling will apply. Special case may apply. When special case may apply? If total income is more than 15 lakhs. So getting my point, everybody? Speak out. Everybody, all of us. Getting my point. If total more than 15 lakhs, क्या बोलेंगे बेटा इसको? If you satisfy greater than or equal to 120 days in previous year and greater than or equal to 365 days during 4 years preceding the previous year, then we'll call you as a resident. सर क्लियर है? स्पीक आउट. अगर किसी बंदे का इनकम 13 lakhs है, 13 lakhs, will the special case come into picture? If he has not satisfied first condition, what do we call him? Non resident. हो गया खत्म. Second modified case वाला कहानी आता ही नहीं. So getting my point, everybody? Speak out, my dear friends. How do I put this again? Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for what, sir? Visit. First condition. Satisfied. क्या बोलेंगे बेटा? First condition. Not satisfied. First condition what, sir? Not satisfied. सीधा मत बोलो नॉन रेजिडेंट. सीधा मत बोलो नॉन रेजिडेंट. क्या चेक करेंगे? Is total income other than foreign sources is greater than no, non-resident. सब बराबर है? ये समझ में आ रहा है आपको टेबल? ये नो है तो नॉन रेजिडेंट बन गया ना? स्पीक आउट. यस. Second modified condition. Second modified condition. Second modified condition is satisfied. Then what do we call him, sir? A resident. Second modified condition
not satisfied. What do we call him? I'll put a star mark for this. And the meaning of the star mark is greater or equal to 120 days and greater or equal to 365 days. That's it. समझ में आ रहा है सर ये कॉन्सेप्ट आपको? In whatever way I can put it, I put it. But I'm sure it makes sense for all of us. बेटा बोलो बेटा, फर्स्ट सेकंड जो स्पेशल केस तो कुछ भी नहीं था. अभी वो लगता है अरे यार कुछ भी नहीं था, वो तो इसमें तो डेप्थ थे. जब वो पढ़े थे तब तभी भी ऐसे ही लगा था अरे ये तो डेप्थ थे. क्लियर है सर? When we don't know, we feel like that. Once we know, matter is over. चलो बेटा, स्पेशल केस वाला फर्स्ट पॉइंट क्या है? Indian citizen leaving India during previous year for the purpose of employment outside India. Second वाला पॉइंट क्या है? Indian citizen leaving India as a member of crew of an Indian ship which is foreign bound. Third one, Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for what, sir? Visit during previous year. He will become resident if he satisfies what? 182 days or more. If he does not serve 182 days or more, then don't decide that he is non-resident. Check something called second modified condition. And the second modified condition story will come only when his total income is more than 15 lakhs. Sir, clear है? सबको समझ में आ रहा है ये बात? Everybody, sir, extremely important. High possibility question will come. Now, see the language. See this. An Indian citizen or a person of what? Indian origin who comes on what, sir? Visit to India during previous year. He'll become resident when he satisfies what? First basic condition. वो गया, then second story. However, such person having what? Total income other than income from foreign sources. Other than income from foreign sources exceeding 15 lakh during previous year will be treated as resident if period of stay during the previous year amounts to 182 days or more. ये तो कैसे भी है. Or he is in India for how many years? 4 years preceding the previous year for how many days? 365 days or more. और last वाला केस क्या है? 120 days or more. So getting my point, everybody? So speak out, all of us. चलो. See this point here? See this note bottom wala? A person is said to be of what origin? Indian origin. If he or either of his parents or either of his grandparents was born in undivided India. So getting my point, everybody? And read this line. Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India comes on a visit to India during what, sir? Previous year. Getting my point, everybody? All of us. Chalo beta, chalu karo. Third special case. Indian citizen or a person of Indian origin Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India, Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India during previous year, who comes to India during previous year for the purpose of visit, who comes to India during previous year for the purpose of visit. You're getting my point, everybody? Speak out. Next line. The above person will be regarded as a resident. The above person will be regarded as a resident. Above person will be regarded as resident only if
he satisfies only if he satisfies the first basic condition. Correct, no? Or, or, or he may satisfy the second modified basic condition. He may satisfy the second modified basic condition. Next line. The concept of second modified basic condition the concept of second modified basic condition the concept of second modified basic condition will apply only if such person is having total income, other than income from foreign sources, total income other than income from what, sir? Foreign sources, other than income from foreign sources exceeding 15 lakhs during the previous year. Getting my point? Sir, we'll write this table now, please. Take the summary.
ग्रेटर देन, एक्सीडिंग 15 lakhs, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है. I think we are getting a lot of clarity on special cases, no? Concept is special case है. करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बहुत सारे, नो डोंट वरी. सर क्लियर है, ये लिख दिए बेटा, बोलो. I suggest you to take this way also. Same thing only, but write this. ठीक है ना, इजी हो जाएगा आपको जब रिवाइज करेंगे तब. आईसी मतलब इंडियन सिटीजन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. And who is a person of Indian origin? He or any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. He or any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. And grandparents cover both maternal and paternal. So getting my point? Can I proceed? बेटा बोलो. अभी देखो, एक extra line I'll add here, with which this concept will get over. Yeah? Sir, by satisfying the second modified condition, will he become resident? Speak out. By satisfying second modified basic condition, will he become resident? Speak, friends. And the story will come only for those whose total income is more than. Clear? Law told, इसको हम resident बोलेंगे, but ये कभी ROR नहीं बन सकता. He'll only be an RNOR. He'll only be an RNOR. We will not touch him for other foreign income. We'll touch him only for business income control wholly or partly from India, professional income which is set up in India. You're getting my point? Speak out, sir. Actually क्या बोलना चाहिए था, 182 वाला बोलना चाहिए था, पर इसको हम क्या बोले, भैया तेरा 15 लाख के ऊपर इनकम है ना, तू एक काम कर, 120 भी सेटिस्फाई किया
तू रेजिडेंट बनेगा। तो हम बोल रहे क्या तुम 120 भी बोलेंगे, 100 भी बोलेंगे, कल के दिन बोलेंगे अगर एक दिन में इंडिया में तो रेजिडेंट है, क्या पागल समझ के रखे क्या हमको? तो गवर्नमेंट ने बोल दिया रो मत, तू रेजिडेंट है बट तू ROR नहीं है, तू क्या है, सिर्फ RNOR। तेरा पूरा फॉरेन इनकम टच नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही टच करेंगे, बिजनेस इनकम कंट्रोल होली पार्टली फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशनल इनकम विच इज सेटअप इन इंडिया। You're getting my point, everybody? So speak out. Everybody clear with this concept, all of us. Something different, peculiar, I know that, but concept is like that. You'll enjoy it, don't worry. Are we clear? Everyone? Chalo, I'll ask you one small question. Tell me the answer, then we'll take a break. Give me 2 minutes. Can I proceed? Right. One person, Mr. Let's say, don't write anything, just listen. David Warner is coming to India let's say 150 days every year since last what sir 10 years, since last 10 years. Clear, my dear friends? Everybody, what will be his residential status? And our question is silent, so what will you assume? We'll assume that he is a foreign citizen. What will be his residential status? सोच के बोलो बेटा। इनकम इंडिया में कितना है, उससे तुमको क्या करना है बोलो। इनकम इंडिया में कितना है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? बोलो यार। Speak out. Will it be ROR or why not ROR? To become ROR, what are the additional conditions to be satisfied? Number one, he must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years. Second one, 730 days or more in last 7 years. In last 7 years, will he satisfy 730 days? Yes. हो गया satisfy. और first additional condition क्या है? Resident in 2 out of 10. That also will satisfy. You can satisfy second basic condition. अरे बोलो यार. 60 days amount during previous year and 365 days amount during 4 years preceding the previous year. So what will be status, sir? Definitely this gentleman will become ROR, no doubt about it. Now why I get this question, our brain started thinking total income 15 लाख के ऊपर है क्या, 15 लाख के नीचे है क्या, ये visit के लिए आया है क्या? All that is irrelevant. All that is relevant only for an Indian citizen. So please check the question whether that fellow is an Indian citizen or not. If he is not an Indian citizen, don't bring that special cases into picture. Special cases story will come only and only for an Indian citizen. If he is not an Indian citizen, special cases story will not apply at all. सबको समझ में आ रहा है सर बात? Speak out everybody. चलो take break. After break we'll talk more.
Chalo, get back, guys. Friends, are we ready? So I'll not add too much of concept today. Don't worry. Today we'll make sure that whatever we discuss, that will become perfect first. Are we clear, everybody? Yes, everyone. Chalo, beta. अब मुझे बताओ, how many basic conditions are there to be satisfied? 2. What are the 2 basic conditions? You have got first condition called 182 days or more during the previous year. Or what is second basic condition? 60 days or more during previous year and 365 days or more during 4 years preceding the relevant previous year. Correct, my dear friends? How many special cases we discussed? 3. What is the first special case? Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Second वाला point क्या है बेटा? Indian citizen leaving India during previous year as a member of crew of an Indian ship which is foreign bound. Basically, obviously that's what we're talking about. Last case, Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. So getting clarity, everybody? Speak out. Everybody, all of us, pakka clear with this point, all of us? Sure? So I'll ask you some questions. Think properly and tell me the answer. Ready? Right. One person, Mr. A, his total income is 16 lakh. Other than foreign sources. Okay? So clear? And this gentleman, Mr. A, is an Indian citizen. Okay? He has come to India for a visit during previous year 22-23. During previous year, which year? So 22-23. 22-23 has come to India for a visit. And he has come to India on 10th December 2022. Okay, my dear friends? And 21-22, he is there for 100 days. 2021, he is there for 300 days. 1920, he is there for 600 kya? He is there for 150 days. 18-19, he is not there at all. Okay? 17-18 and all, पूरा nil. Is that clear? Question समझ में आया सबको? Speak out, everybody. Right. My question to you first. My first question to you. What is his residential status? गया कब क्यों? वो आया इंडिया में. He has come to India on 10th December. 10th December, he has come. He left नहीं है भाई. बाहर ही था, आया. Speak out. क्यों बेटा? Second modified condition. 182 days तो कैसे भी गया? कितने दिन है इंडिया में? नहीं 10th December ना, तो कितना दिन हो रहा है? 112. अरे yes or no sir? 22 days in December plus 31 plus 28 plus 31 कितना आ रहा है? 112. So if it's 112, if it is 112, can you satisfy first basic condition? No. Can you satisfy second modified condition? What will the status become? Speak out. Right. Question number 2. Listen. What would be your answer if A is a foreign citizen? Question समझा? What am I asking? What would be the answer if he is a foreign citizen?
अब मेरा चेहरा मत देखो यार, सोच के आंसर बोलो बस. You see my face, what will come? क्या कंडीशन देखेंगे आप? What is the answer? RN. Undoubtedly, that is the answer, RNOR. Now, don't tell me non-resident. The reason I'll tell you why. Because he can satisfy second basic condition. He'll become an RNOR by satisfying what? Since he satisfies, क्या बेटा? Second basic condition. अब स्टूडेंट पूछ रहा है सर सेकंड बेसिक कंडीशन का कहानी आया है क्यों? सेकंड मॉडिफाइड आना चाहिए था ना भैया. मॉडिफाइड का स्टोरी तभी आएगा अगर वो इंडियन सिटीजन है. Special case will come into picture only that fellow is a Indian citizen. So getting my points? If he is not an Indian citizen, special case will not come into picture. If special case does not come into picture, we have two options. Option 1, 182 days or more. Option 2, 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. समझ में आ रहा है? अरे 3 है तो क्या हुआ, पूरा मिलके 365 तो हो गया ना यार. अरे हर साल आना जरूरी है क्या? हर साल इंडिया में रहना जरूरी है क्या? अगर एक साल 365 है बाकी 3 साल 000 है, स्टिल माय आंसर इज सैटिस्फाइड ओनली. अरे यार, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट एवरी ईयर वन डे शुड बी देयर इन इंडिया. नो यार. सो गेटिंग माय पॉइंट्स. आर वी क्लियर विद दिस एग्जांपल? पक्का? एक और क्वेश्चन पूछूं, बोलेंगे आंसर? थोड़ा सा अभी सीखे ना यार, थोड़ा परफेक्शन तो आना चाहिए ना यार. देन वी कैन सी सम क्वेश्चंस, बट फर्स्ट वी हैव टू बिकम परफेक्ट ऑन व्हाट वी लर्न सो फार. Now listen. One person, Mr. X. This man is an Indian citizen who left India for the first time on 10th December 21. And he has come back to India permanently on 4th August 22. On 4th August 22. Determine residential status for assessment year 22-23. Small change in the question. Small change. Wait. एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन. क्या है बेटा आंसर? स्पीक आउट. वंडरफुल. आंसर इज ROR. ये नॉन रेजिडेंट कैसा बोले आप मेरे को बोलो? 10th दिसंबर से कैलकुलेट करे. अरे यार मुझे एक बात बोलो, माई पॉइंट वेरी क्लियरली, लेट मी टेल यू. हाँ वेरी गुड, शार्प बॉय. असेसमेंट ईयर कौन सा है बेटा? 22-23. प्रीवियस ईयर कौन सा है? सॉरी, स्मॉल चेंज. असेसमेंट ईयर, आई वांट, माय बैड. असेसमेंट ईयर 23-24. व्हाट इज प्रीवियस ईयर? 22-23. नाउ टेल मी वन पॉइंट वेरी क्लियरली. इन 22-23 डिड ही लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट? अरे in 22-23 previous year, did he leave
India for employment purpose. In 22-23, did he leave India for employment purpose? Speak out. When the answer is no, he can satisfy any one of the basic condition. What is anyone? 182 days or 60 and 365? अरे बोलो यार, जब 10th दिसंबर को वापस आ गया इंडिया में, अब मुझे बोलो सर, ये मत बोलो कि वो तो ऑलरेडी जा चुका है ना सर, ऑलरेडी गया नहीं गया वो नहीं पूछ रहा मैं, प्रीवियस ईयर में निकला क्या इंडिया से? तो समझ रहे हैं मेरी बात? So special case will come into picture only when Indian citizen is leaving India during the previous year. Did he go during the previous year? Did he go during the previous year? No. So either you can satisfy first one or second one, no? Speak out. Ye kab aaya permanently? 10th December 22. That means what? 10th December, how many days? 22 days in December, 31 days in Jan, 28 days in February, 31 days in March. 100 and? Can you satisfy second basic condition? Speak out. Can you satisfy additional conditions? Should I asking sir आपको कैसे पता वो satisfy कर रहा है? पूछने की जरूरत ही नहीं है. He left India for the first time on 10th December 21. उससे पहले पूरा इंडिया में ही था, तो कैसे भी वो satisfy करेगा additional conditions? It is quite obvious that sir, when people like us, if we leave India for the first time outside India, then obviously हम लोग तो additional condition कैसे भी satisfy करेंगे ना यार? पिछले 7 साल में 730 days तो इंडिया में है ही, और 10 साल में 2 साल कैसे भी रेजिडेंट बनेंगे हम लोग? So that if somebody is leaving India for the first time, then obviously will satisfy the second basic two additional conditions. So getting my point, everybody? So speak out. Everyone, clear or not, all of us? So getting clarity or not? Please reply, are we clear with this? Why it is ROR? Sure? Speak out. इधर एग्जाम में जब क्वेश्चन आया ना तो दिमाग क्या चलता है? अरे ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया मतलब वो स्पेशल केस है वो, बट स्पेशल केस अप्लाई होगा ही नहीं इस केस में. स्पेशल केस अप्लाई इसलिए नहीं होगा बिकॉज वो प्रीवियस ईयर में बंदा गया नहीं. डिड ही गो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर? नो, मैन हैज नॉट गॉन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. स्पेशल केस विल नॉट कम इनटू पिक्चर. बेटा समझ में आ रहा है? स्पीक आउट. कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? चलो, let's discuss some questions. Yeah? Student is asking, so why did you not talk about the concept called third special case? He's coming to India for a visit. My answer is he did not come for a visit. He has come back to India permanently. मैं visit बोला क्या? अरे special case तो अप्लाई होगा ही नहीं इधर. You're getting what I'm talking? Everybody. One person, Mr. A. His total income other than foreign sources is 13 lakhs. How much the figure, sir? 13 lakhs. And this gentleman is a foreign citizen. And in 22-23 previous year, he stayed in India for 131 days. 21-22, 100 days. 20-21, 200 days. 19-20, 250 days. 18-19 onwards, nil. Sorry? क्यों? Sorry? RNOR? Pakka? Sure? Wonderful. So residence status of this person is what, sir? RNOR. Now my question to you.
what would be your answer if A is an Indian citizen? नील लिखा ना, नील मतलब क्या? इंडिया में नहीं है। अरे नील लिखा मतलब क्या मैडम? बोलो, इंडियन सिटीजन है तो क्या होगा आंसर? स्पीक आउट। वाई? नॉन रेजिडेंट मीन्स यू हैव टू सैटिस्फाई विच कंडीशन? 182 डेज। 182 तो कैसे भी गया, 120 का कहानी कब आएगा? अगर 15 लाख के ऊपर है तो आएगा। सब बराबर है सर। सो विल दिस फेलो विल बिकम व्हाट सर? नॉन रेजिडेंट। फाइनली let me ask you, सब visible है? What would be your answer if A is Indian citizen and total income is 16 lakhs? स्पीक आउट एवरीबॉडी, बोलो बेटा क्या होगा? RN। एक्सलेंट। आई थिंक एवरीबॉडी इज गेटिंग क्लैरिटी नाउ। सर स्पीक आउट सर। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देखेंगे, अभी ध्यान किधर जा रहा है? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, पहला बंदा, भैया ये भैया इंडियन सिटीजन है या नहीं है। अगर इंडियन सिटीजन है तो स्पेशल केस का कहानी आएगा, अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो स्पेशल केस का कहानी आ ही नहीं सकता है। अगर स्पेशल केस का कहानी आया, then what we check, either it's first special case or second special case. If it is first special case or second special case, we look at the story of only 182 days. अगर थर्ड स्पेशल केस में आया, मतलब क्या? he has comes to India for a visit, तो हम चेक कर लेंगे 182 satisfy हो गया, भैया तू रेजिडेंट है। 182 नहीं हुआ बट 120 के ऊपर है, तो हम ये चेक करेंगे तेरा टोटल इनकम कितना है। 15 लाख के ऊपर है तो भैया तू RNOR, नहीं है बेटा तू NR। समझ गए हाउ वी आर गोइंग द सीक्वेंस? पैटर्न क्लियर है सबको? चलो फर्स्ट क्या चेक करेंगे हम? इंडियन सिटीजन है या नहीं है। अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो क्या होगा बेटा? स्पेशल केस अप्लाई होगा ही नहीं यार। फर्स्ट गेट दैट पॉइंट वेरी क्लियरली टू योर ब्रेन। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, फर्स्ट स्पेशल केस क्या पढ़े हम? इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड एज ए क्रू, इंडियन सिटीजन और पर्सनल फिनांस कमिंग टू इंडिया फॉर ए विजिट। तीनों के तीनों केस में इंडियन सिटीजन होना जरूरी है ना यार। अगर एक बंदा फॉरेन सिटीजन है तो उसको स्पेशल केस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता क्या? अप्लाई होगा ही नहीं। तो अगर फॉरेन सिटीजन बोलता है, मतलब अगर क्वेश्चन इंडियन सिटीजन बोला नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो स्पेशल केस में जाएंगे नहीं हम लोग। बराबर है सर? स्पेशल केस में जाने का ही नहीं है अपने को। स्पेशल केस में तभी जाएंगे अगर इंडियन सिटीजन है। अगर स्पेशल केस में फर्स्ट वाला सेकंड वाला स्पेशल केस है तो हम क्या बोलेंगे? भैया ये रेसिडेंट तभी बनेगा अगर 182 डेज और मोर इंडिया में है तो। करेक्ट। अगर थर्ड स्पेशल केस में आ गया, ये आदमी थोड़ा अलग डिफरेंट स्टाइल का आदमी है। क्या है वो डिफरेंट स्टाइल का आदमी? इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर ए विजिट। अगर वो थर्ड वाला स्पेशल केस में आया तो हम ये बोलेंगे भैया 182 डेज इंडिया में है क्या? अगर है तो रेसिडेंट, नहीं है तो हम ये देखेंगे 120 के नीचे, 120 के ऊपर है। 120 के नीचे तो छोड़ भैया, इसको बाढ़ में जान दे, नॉन रेजिडेंट। बराबर है? 120 का ऊपर है, फिर अगला एक क्वेश्चन उठेगा। क्या है अगला क्वेश्चन? 15 लाख के ऊपर है या नहीं है? क्या 15 लाख के ऊपर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस? 15 लाख के ऊपर है तो पकड़ो उसको, बोलो रेजिडेंट, बट बोलो RNOR। अगर 15 लाख के नीचे है तो बात ही मत कर, तेरा 120 दिन से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 182 का ही देखेंगे। अभी क्लैरिटी आ रहा है सबको? स्पीक आउट सर। सर और भी एक दो स्पेशल पॉइंट्स है, बट आई एम नॉट टचिंग दैट सो फार बिकॉज आई वांट दिस टू बी परफेक्ट फर्स्ट। नो, अगर मैं वो भी फिक्स कर दूंगा तो सब खिचड़ी बन जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर पहले ही। खिचड़ी टेस्ट अच्छा रहता है बट बनने में मेहनत लगती है। सर आर वी क्लियर विद दिस? एवरीबॉडी गेटिंग क्लैरिटी? पक्का? कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? ये सब एग्जांपल्स लिखना है आपको, नहीं लिखना है? लिखना है ना? तो कुछ बोल रहे नहीं, मैं आगे जा रहा हूं। अच्छा आप सोचो बाद में लिखाएंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनो, वन पर्सन मिस्टर ए हु इज एन इंडियन सिटीजन, क्वेश्चन देख के ध्यान से समझ के बोलो आंसर। हुज टोटल इनकम
अदर देन क्या बेटा, is equal to 25 lakhs. Okay, he has come to India on 15th February 2023. He has come to India on 15th February 2023 for a visit of 190 days. 190 days. Clear, my dear friends? Beta bolo. Dhyan do yaar yahan pe, please. Come on. For a visit of how many days? 190 days. So getting clarity? And this man, 190 days. And prior to 22-23, he was in India every year for 200 days. कितना दिन है बेटा? 200 days. हर साल तो है ही. क्वेश्चन समझ गए मेरा? Now my question to you is, Mr. A जो है उसका residential status for assessment year 23-24. मजा आ रहा है चैप्टर? ऐसा खेलते एग्जाम में. That is the reason why we always say that CA inter taxation you have to be very, very clear, because final level all the story will again repeat again, and there you will have more advanced level also. So unless you are very good with inter, final becomes a challenging task again. चलो सोच के बोलो. Think properly and tell me. Bolu. Huh? How many of you say non-resident? How many of you say resident? RNOR. Good. क्या लॉजिक है आपका? तो आप एनआर बोल रहे हैं, RNOR बोल रहे हैं. वो रेसिडेंट कैसा बना सबसे पहले? क्या क्या क्या? 120 डेज का लिमिट है. हाँ, कितने दिन है ये? अरे कैसा बदल गया आपका आंसर? बोलो. अरे क्योंकि वो अरे 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 he will definitely become a non-resident, because you should not get tempted. सर लाइफ में टेम्प्ट होना बहुत ज़्यादा ईजी है यार. नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. डोंट टेक इन अ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट. बट लाइफ में टेम्प्ट होना बहुत ज़्यादा ईजी है. We generally get tempted. For example, if you ask me, when I see food, when I see ice creams, I get tempted. I get tempted actually. When I see food, I just love the food. मैं कोई भी फंक्शन में जाता हूँ सिर्फ खाने के लिए जाता हूँ. मैं खुला बोल देता हूँ उसको. तो मैं अगर दोस्त की शादी में गया, उसको स्टेज पे जाके मैं बुके दिया उसको. आफ्टर दैट फेलो सेज भैया खाना खा के जाना है. मैं डायरेक्ट फेस पे बोलता हूँ, उसके लिए तो आया, तेरे लिए थोड़ी ना आया भाई. फैक्ट बोल रहे हैं हम लोग. बाकी लोग तो फैक्ट बोलते नहीं. अरे बोलते हम तेरे लिए आए. कुछ भी स्टोरी मत बोलो यार. So clear है my dear friends? So it's so easy to get tempted in life. So in the same manner है, here एक बार 180 days देख के students exam में लिख दिए resident institutional November will become May. May will become November. What is the answer? Non-resident. Because we have to see from 15 February 23 to 31st March 23. अरे कितना भी हो यार, 40 दिन 50 दिन जो भी है, whatever is coming. कितना दिन आ रहा है? 40. खत्म हो गई बात. 60 दिन भी नहीं है ना यार. अरे बोलो यार. दिस ओनली हाउ मेनी डेज? 44 डेज. पूरा दिमाग बाद में चलाएंगे. क्या है पूरा दिमाग? स्पेशल केस आता नहीं आता. स्पेशल केस आए तो 120 वाला आएगा, 182 आएगा, 60 आएगा. वो सब छोड़ो. सबसे पहले प्रीवियस ईयर में कितना दिन है वो? 44 डेज. कैन यू बिकम ए रेजिडेंट? By applying any special case, can you become a resident?
इम्पॉसिबल, आंसर इज नॉन रेजिडेंट. हो गया, खत्म कार्य उधर ही. सर सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको ये चीज? बेटा बोलो बेटा, एवरीबॉडी आर वी क्लियर विद दिस? स्टूडेंट पूछ रहा है सर ये टोटल इनकम 25 लाख आप क्यों दिए? टाइम पास. क्योंकि आप वो देख के सोचेंगे अरे 15 लाख के ऊपर है, कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा. क्या ध्यान देंगे, 40 दिन भी नहीं है वो. सर समझ में आ रहा है आपको? See, the reason why they give all the information of 25 lakhs, 190 days and all is only to tempt you. हम देख के उधर क्या, उधर ही रुक जाते हैं हम. क्या सोचते हैं 25 लाख है मतलब 15 लाख के ऊपर है, 190 डेज के लिए आया मतलब ऑलमोस्ट 182 डेज के ऊपर है, तो रेजिडेंट बन सकता है. थोड़ा ध्यान से देख बेटा, कुछ तो गड़बड़ है. देन वी विल सी 190 डेज, ठीक है, रेजिडेंट. बट द लॉजिक इज व्हाट? वी आर लुकिंग एट एस्टिमेटेड 23-24, प्रीवियस इज 23-22-23. ठीक है, 190 डेज के लिए आया, बट प्रीवियस ईयर में कितना दिन है? 44 days. How many days he has come is not important. How long is there in previous year is important. कब आए important नहीं है. So getting my point, everybody? All of us, my dear friends, it's important to know not how many days he has come, how many days he has come during the previous year. That is very important. Sir, I hope you are getting my point. Everybody, he just tries to play with us by giving all this extra information which is not relevant for us. पर अपने को दिमाग बोलना चाहिए भैया वो सब टाइम पास है, मेरे को क्या रिलेवेंट है, प्रीवियस ईयर में कितना दिन है, वो एक ही चीज मुझे देखना है बस. बाकी सब चीज से मेरे को कोई लेना देना है नहीं. 15 लाख के ऊपर है तो मैं क्या करूं? करेक्ट? नो सर, प्रॉब्लम इज वी आर ऑल सीए स्टूडेंट्स. नो, समटाइम व्हाट हैपेंस इज आवर ब्रेन विल टेल अरे ये 25 लाख से कुछ लेना देना नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट है, 44 डेज ही है, आंसर करेक्ट आता है. बट 2 मिनट के बाद डाउट आता है अपने आप पे, हाउ कैन आई गेट करेक्ट आंसर? मुझे करेक्ट आंसर आ सकता है क्या ऐसा, वो भी इतना जल्दी? बराबर है. आई नो व्हेनेवर बैलेंस शीट टैली आल्सो विल गेट इट आउट. टैली हो गया सच में. एक्सपीरियंस करें फाउंडेशन में. I mean, I have seen that a lot because I mean, as a student, when I was a student, I used to solve a problem. Perfect answer आता था. क्लास सबसे पहले मेरा आंसर आ गया. अब सब तो कर रहे, मेरा तो आंसर आ गया, इतना जल्दी आ गया, पक्का कुछ तो गड़बड़ है. थोड़ी देर चुप बैठते, सबका सुनते, फिर रिएक्ट करते. करेक्ट है सर? Here some friends already thought non-resident. वो बोलने वाले थे नॉन रेजिडेंट. इधर देख रहे, कोई बोल रहे नहीं कुछ. ठीक है, रुकते 2 मिनट. चलो एनीवेज, क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? स्पीक आउट. अभी थोड़ा पिक्चर परफेक्ट आ रहा है सबको? श्योर? चलो बेटा, कितना स्पेशल केसेस है? 3. फर्स्ट वाला स्पेशल केस क्या है? इंडियन सिटीजन फॉर द ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर for the purpose of employment outside India. Indian citizen leaving India during previous year as a member of crew of an Indian ship which is foreign bound. Last वाला केस क्या है बेटा? Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. He will become resident only if he satisfies 192 days or more. However, there is a special case, that is, if your total income other than income from foreign sources is more than 15 lakhs, you will be called as resident even if you satisfy second modified basic condition. What is that modified basic condition? 60 became 120. उतना दिमाग चला की याद रखने जरूरत नहीं है भैया. 60 हो गया 120, डबल हो गया. बराबर ना यार? सिंपल. और 15 लाख के नीचे 182 है तो रेसिडेंट, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट. खत्म. खत्म कहानी. भारत माता की जय. हाँ बस. आर वी क्लियर? हाँ, तो वही अमित सर याद है कि मुझे अचानक अभी आज ये क्लास आपका. ठीक है. एनीवेज सर, क्लियर है एवरीबॉडी? स्पीक आउट. कैन आई प्रोसीड प्लीज? एक और एग्जाम्पल लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और देखते देखेंगे सर. थोड़ा जितना ज्यादा देखते उतना अच्छा है, मतलब यू विल बिकम मोर परफेक्ट. ठीक है. अभी देखो, 1 पर्सन मिस्टर अमित, ही इज ए citizen of India. He is citizen of what, sir? India. Clear, my dear friends? This man left India for the first time. Left India for the first time on 10th Jan 23 for vacation. For what, sir?
vacation to US and returned on 10th June 23. And Mr. Amit, total income is only 12 lakhs, less than 15 lakh. ठीक है ना बेटा? तो मैं बोलता भाई I am surprised. Determined residential status for assessment year 23-24. हाँ? Speak out. अरे कैलकुलेटर क्या चला रहे हो यार आप लोग? सीधा का सीधा आंसर क्या है बेटा? ROR. क्यों? तो इंडिया कब गया? वेकेशन के लिए गया. सबसे पहले वेकेशन के लिए गया. स्पेशल केस आएगा क्या? इंडियन सिटीजन है बट एम्प्लॉयमेंट के लिए गया क्या? क्रू मेंबर बन के गया क्या? विजिट के लिए आया क्या? स्पेशल केस आएगा क्या? स्पेशल केस नहीं आएगा तो क्या होगा? 182 वाला ऑप्शन है या तो 60 and 60 वाला ऑप्शन है. ये भाई साहब गए कब? 10th Jan 23 को गए, मतलब 9th Jan 23 तक तो इंडिया में ही है. अरे बोलो भाई, भैया ये भाई साहब फर्स्ट कंडीशन में सेटिस्फाई करते, सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाई करते, जो आपको चाहिए वो ले लो. अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आपको कैसे पता कि एडिशनल सेटिस्फाई करेगा? कोई आदमी पहली बार जा रहा है तो कैसे भी सेटिस्फाई करेगा यार वो. 730 days or more in last 7 years and दूसरा वाला क्या है वो रेजिडेंट इन 2 out of 10 years. आज इतना बेसिक डिस्कस कर रहे हैं कि एडिशनल साइड ही हो गया पूरा. सर क्लियर है सबको? एवरीबॉडी चलो बेटा ये एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद हम और एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं आज. लास्ट स्पेशल केस. हाँ सारे लिखना है क्या? लिख लेंगे ना बेटा, हो जाएगा ना? एक बार बुक में प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा. एग्जाम्पल 1. एक 10 दिसंबर को आया तो कितना दिन हुआ इसका? 112 बोले ना? हाँ बेटा 112 हुआ ना? ठीक है तो 112 हुआ तो 120 नहीं हो सकता, 182 नहीं हो सकता है. कौन सा? क्यों? अरे 10 दिसंबर को आया ना वो. वन वन टू से अच्छा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अरे बज में डेज लिखा ना यार. क्या है यार तू? अब 111 नहीं बोलता तू फिर. ठीक है 13 दिसंबर कर. कितना दिन आ रहा है? 2 दिन कम कर दिए ना तो 11. अरे 115 थोड़ी ना होता है यार. 112 नहीं होगा, 110. अरे कम किया ना यार. अब 110 तो कोई सेक्शन नंबर नहीं है आपके सिलेबस में. हाँ एंजॉय कर अभी. देखो स्टार्टिंग में जब बताया था स्पेशल केसेस, सबका चेहरा छोटा हो गया. अरे यार क्या हो रहा है यार हमारे साथ, इतना बलात्कार हो रहा है. देखो आफ्टर 1-2 hours हाउ सिचुएशन नाउ. अरे यार कुछ भी नहीं है, 3 स्पेशल केस है. फर्स्ट स्पेशल केस में देखेंगे 182, सेकंड स्पेशल केस में देखेंगे 182, तीसरा स्पेशल केस में भी देखो 182. अगर 15 लाख के ऊपर है तो स्पेशल केस और क्या आएगा? 120. 120 के ऊपर है तो रेजिडेंट, नीचे है तो नॉन रेजिडेंट. अगर रेजिडेंट बना तो वो पक्का RNOR ही बनेगा. बराबर सर? हो गया ना? इतना ही तो कॉन्सेप्ट है. डन, दैट्स इट. नथिंग इज बिग, नथिंग इज स्मॉल. इज जस्ट अबाउट द क्लैरिटी, दैट्स इट. If clarity is there, definitely it is possible. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है बॉस. कोई टच नहीं कर सकता अपने को. अगर क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन बोलेंगे तो ही हम इंडियन सिटीजन अज्यूम करेंगे, वरना विल नॉट अज्यूम दैट इज इंडियन सिटीजन. क्लियर है ना बेटा वो चीज? तो
अच्छा हो गया, एग्जाम्पल 1 हो गया. कैन आई मूव फॉरवर्ड? गाइस प्रोसीड. चलो ये भी ले लो बेटा, सेकंड एग्जाम्पल. ये तो कुछ भी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है. सर इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी क्या है दोस्तों? एक बार रुक जाओ, एक बार डोंट राइट एनीथिंग, 1 सेकंड. इस क्वेश्चन का स्पेशल केस पॉइंट क्या है? मैं क्यों दिया क्वेश्चन, आपको क्या लगता है? दिस क्वेश्चन इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर स्पेशल केस डज नॉट अप्लाई. और लगता है स्पेशल केस अप्लाई होगा बट अप्लाई होता नहीं, बिकॉज 22-23 प्रीवियस ईयर में वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया नहीं, वो क्रू मेंबर बन के गया नहीं, वो विजिट के लिए आया नहीं. किसके लिए आया? वो परमानेंटली. वो क्वेश्चन देखे तो ऐसा लगता है स्पेशल केस अप्लीकेबल होगा, बट है 3 लाइन, बट स्पेशल केस अप्लीकेबल होगा जैसा दिखता है, बट स्पेशल केस अप्लीकेबल होगा ही नहीं. समझ रहे हैं आप क्वेश्चन का खासियत? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. गुड. हाँ ठीक है. Done. Example 2 is over. Then example 3. इसमें क्या स्पेशलिटी था? एक तो ये फॉरेन सिटीजन है तो RNOR हो गया, ठीक है. अगर इंडियन सिटीजन है तो NRQ हुआ, क्योंकि 15 लाख के नीचे है. लास्ट केस क्या दिया मैंने? इंडियन सिटीजन है और 16 लाख रुपए, तो RNOR बन जाएगा. परफेक्ट. सर ऊपर वाला, ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख रहे क्या अभी? देख लिया? हो गया दोस्त? डन. थैंक यू. सर आप एक सेकंड लिखने से पहले एक बार देख लो एक बार. सर ये क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले ये फॉरेन सिटीजन स्पेशल केस एप्लीकेबल होगा नहीं, बराबर. स्पेशल केस अप्लाई नहीं हो तो क्या होगा? RNOR इसलिए बन गया बिकॉज सेकंड एंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया. एंड आई आस्क्ड व्हाट विल बी योर आंसर इफ ही इज इंडियन सिटीजन. इफ ही इज इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर ए विजिट, he must satisfy 182.
122 का कॉन्सेप्ट तभी आएगा अगर 15 लाख के ऊपर है तो, सब बराबर। और 13 लाख से बोल के क्या बनेगा वो, नॉन रेसिडेंट। एंड इफ एज इंडियन सिटीजन इनकम इज 16 lakhs, व्हाट इज आंसर देन, आर एन ओ आर, because it will satisfy that second modified basic condition. Clear? लिख लो। सर नो प्लेस, तो मैं छोटा लिखना पड़ा, प्लीज एडजस्ट कर लो वहां पे। I wrote since he is satisfied second modified basic condition. Please adjust. हो गया बेटा? हाँ हाँ, नो नो प्रॉब्लम, वेट। अब सर बोले तो मुझे ऐसा लगा कुछ डाउट डाउट। सर वो मैं ब्लैक से लिखा है मैंने, सिंस ही सेटिस्फाइड सेकंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन, ठीक है ना? सर डन हो गया, 2 मिनट अभी। कितने एग्जाम्पल हो गए? ये भी लिख लो। इसमें क्या इंटरेस्टिंग था, यस कम टू 55 90 डेज, 190 डेज रिलेवेंट नहीं है, 25 lakhs रिलेवेंट नहीं है। क्या रिलेवेंट है? प्रीवियस ईयर में कितना दिन था, प्रीवियस ईयर में कितना दिन आया है, सिर्फ 44 डेज। तो ये भाई साहब कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है कोई भी हाल में, करेक्ट ना यार? एवरी एग्जाम्पल इज डिफरेंट।
हो गया बेटा? चलो, this is the last example. Excuse me. दोस्तों, हो गया एग्जाम्पल पूरे? That's it. Tell me guys, what is section 6.1? Basic conditions. How many are there? What are two conditions? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year, and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. But there are three special cases. Case number 1, India citizen leaving India during previous year for the purpose of employment outside India. He is regarded as a resident only if he satisfies first condition. Number 2, India citizen leaving India as member of crew of an Indian ship, foreign bound, yeah, and he is resident only if he satisfies first basic condition. Third special case, that is important, Indian citizen, important मतलब तीनों भी important है, ये मतलब थोड़ा अलग है. Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. He is resident only if he satisfies 182 days or more. Even if he does not satisfy 182 days or more, he may still become resident if he stays in India for, if he satisfies second modified basic condition. And the second modified condition story will apply only if the total income other than income from foreign sources is more than. That's it. Full clarity, sir. आज एक्चुअली आपको मैं 3 ही पॉइंट पढ़ाया अभी तक. आई डिड नॉट टीच यू मोर, बट 3 पॉइंट में ही कॉन्सेप्ट बहुत है. एंड क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं आया ना क्लैरिटी तो गया पूरा का पूरा गया. कभी समझ में नहीं आता वो, और लगते रहते ये क्या कचरा है, नॉनसेंस. वो कचरे का फीलिंग नहीं आना चाहिए. वो कचरा नहीं है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट. सो आर वी क्लियर? Yes? Can we discuss the last concept for today? That's it. I'll not teach you more. With this, I'll close it off. Last concept for today, that is deemed resident. बेटा क्या नाम है इसका? Section 6, subsection 1A. It is not section 6, subsection 1 clause A. दोनों एक ही ब्रैकेट में. सॉरी यार, 6 1 अलग ब्रैकेट, ये अलग ब्रैकेट, तो 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज होता था. बट यहां पे क्या है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A. नेम ओनली सेज डीम्ड रेजिडेंट. Sorry to say, but government has put this point only more to trouble people. I'll tell you why. Because this point is slightly illogical, but they kept a point like this. You listen carefully what they told. थोड़ा सा मतलब 2 मिनट में हो जाएगा, बट अलग ही है. मतलब पहली बार मैं जब अमेंडमेंट आए ये जब पढ़ा था, मुझे लगा अरे क्या है ये, मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्सटेंट तक पहुंच गया अभी. सुनो उन्होंने क्या बोला है, आपको खुद को शॉकिंग लगेगा क्या बोल रहा है. पॉइंट नंबर 1, he must be an Indian citizen and his total income. ये
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है. His total income other than what's a foreign sources is greater than 15 lakhs. सेम पॉइंट है वो तो. अरे बोलो यार. एंड ये लाइन देखो यार, मुझे यार मतलब अलग ही लगा जब पहली बार पढ़ा. He is not liable to tax in any other country. हो गया कॉन्सेप्ट. समझ गए इंडियन गवर्नमेंट का लॉजिक है. एक बंदा इंडियन सिटीजन है, समझो एक बंदा इंडियन सिटीजन है. ही वेंट टू हांगकांग, ही वेंट टू, और लेट्स से ही वेंट टू दुबई, कंप्लीट टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री, जीएसटी वगैरह वो सब तो है, इनकम टैक्स फ्री. और लेट्स से वन पर्सन मिस्टर एक्स हु इज एन इंडियन सिटीजन, ही वेंट टू वन आइलैंड कॉल्ड मॉरिशस. मॉरिशस सुने नाम? नियर द अफ्रीका ओनली देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड मॉरिशस. Just beside the African continent, there is a Mauritius island. And Mauritius is a complete income tax free area. That is the reason why a lot of companies come to India through Mauritius. When I say come to India through Mauritius, मतलब flight पकड़ के, train पकड़ के आना नहीं है. You're getting what I'm talking, no? US company, what they do is, if they want to float an Indian company, they'll float one company in Mauritius. They will hold shares in Mauritius. Mauritius company will hold shares in India. In order to enjoy the tax benefit, from here they'll push money there. But from here they'll not push money here. If they push the money here, US में टैक्स लगेगा. So they will hold the whole money in Mauritius. वहाँ पे कुछ कंपनी नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है. एक छोटा सा रूम रहता है बस for address proof. So there are places like Mauritius, Cayman Islands, Panama Islands. There are places like that where people don't do any activity, but they get the company registered there in order to enjoy the tax benefits. You are getting my point? So एक बंदा एक से सर इंडियन सिटीजन है, ये बंदा गया किधर गया? Mauritius. Complete tax free, and his total income other than foreign sources is more than what? 15 lakh, and he is not liable to tax in Mauritius. हम बोल रहे भैया तू किधर भी टैक्स पे नहीं कर रहा ना, तू बन जा हमारे पास डीम्ड रेजिडेंट. You getting my point? He is not a resident. He is only deemed to be a. समझ गए आप लोग? I mean, I know it's little awkward for me also to teach this concept, but मैं कुछ नहीं कर सकता यार. जब मैं पहली बार पढ़ा मैं खुद भी शॉक हो गया. और लास्ट लाइन पढ़ के, he is not liable to tax in any other country. कोई भी कंट्री में लाइबल नहीं है तो तेरे पास रेजिडेंट क्यों बनेगा? You're getting what they're saying? People will get it out. अगर मैं कोई भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करूँ, तेरे को क्या मतलब है उससे? तेरे को क्या मतलब है उससे? वो बोल रहा है भाई नहीं भाई, तू इंडियन सिटीजन है ना, तेरा इनकम 15 लाख के ऊपर है ना, तेरे को हम बोलेंगे डीम्ड रेजिडेंट. बोला कैसा बना भाई रेजिडेंट? कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया मैं? तो गवर्नमेंट इज रिप्लाइंग, इसलिए तो हम बोल रहे हैं तेरे को डीम्ड रेजिडेंट. रेजिडेंट थोड़ी ना बोले हम, तेरा नाम है डीम्ड रेजिडेंट. यू आर नॉट रेजिडेंट बट यू आर डीम्ड टू बी ए रेजिडेंट. सो गेटिंग माय पॉइंट? और ये डीम्ड रेजिडेंट बंदा हमेशा हमेशा के लिए दिस फेलो विल ओनली बी एन आरएनओआर. एनआर बोलेंगे तो जूते लेके मारेगा फिर वो. यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? अरे फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है इंडिया में. And sir, who satisfies the condition, the story will not come. The story will come into picture only for those who is not satisfying any basic condition, but still is deemed to be a resident. If he is satisfying basic condition and becoming resident, matter is over. No, इसका कहानी आएगा भी क्यों? ये कहानी किसको applicable है? Basic condition satisfy नहीं किया, फिर भी हम उसको क्या बोल रहे हैं? Deemed to be resident. तू तो पे भाई, तू तोड़े, तू एकदम deemed resident है तू. बट तो ये कब आएगा? अगर आप इंडियन सिटीजन हो और टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज मोर देन 15 लाख एंड यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री. अगर तुम बोलते मैं इंडियन सिटीजन हूं, यूएस में जाके काम कर रहा हूं, आई एम सिटिंग इन यूएस, आई एम नॉट सेटिस्फाइंग एनी बेसिक कंडीशन, सर बोलो यार नॉन रेजिडेंट, करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, बट टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख. गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं? यू आर डीम्ड टू बी ए resident. Am I a resident? No, but still you are deemed to be a resident. सर समझ में आ रहा है? हो गया, कुछ भी नहीं है, सिंपल. अरे सच में हो गया यार. अब इतना हाई लेवल सीख के बाद ये लग रहा है यार ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है. हाँ तो इसलिए तो बोल रहा ना, यूएस में टैक्स, सॉरी यूएस में टैक्सेबल है तो यू आर नॉट डीम्ड रेजिडेंट. इफ यू नॉट लायबल टू टैक्स इन यूएस, यू आर डीम्ड रेजिडेंट. यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स? सर गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है बोलूं? इसके पीछे एक ही लाइन बोलता हूं मैं, भैया अगर तू कोई कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा ना, तेरे को हम बोलेंगे डीम्ड रेजिडेंट.
this is as good as a, what do you call, a fiction created in the law. A fiction created which you are not satisfying condition, but still we are saying भैया तू डीम्ड रेजिडेंट है बिकॉज तू कोई भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे और तू हमारा आदमी है. वो बोल रहा है हमारा आदमी कैसा बना रहे, इंडियन सिटीजन है ना. तो बोल रहे हमारे ऐसे छोटे लोगों को छोड़ दो यार, छोटा आदमी क्या है तू, 15 लाख के ऊपर है तेरा इनकम, तू डीम्ड रेजिडेंट है. वो बोल रहे 15 लाख थोड़ी नहीं है, 13 लाख है. अच्छा ठीक है जा फुट, डीम्ड रेजिडेंट नहीं है, कुछ नहीं, चल निकल. समझ गए आप बात? एवरीबॉडी दैट्स इट, ओवर. चलो पुट साइड हेडिंग डीम्ड रेजिडेंट. Deemed resident. Bracket section 6. Subsection 1A. 1A. A capital A beta. Section 6 subsection 1A. ये लिखो मत, मैं बोलूंगा, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो. ठीक है? मतलब फर्स्ट लाइन आई वांट टू ऐड सम लाइन. लिखो नीचे. An individual shall be treated as an individual shall be treated as deemed resident. An individual shall be treated as deemed resident. लिखे सर, deemed resident. सर एक सेकंड सुनो ना मेरी बात यहाँ पे प्लीज, 1 सेकंड. सर इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आर एन ओ आर उधर भी बोले थे हम, किधर 120 डेज सेटिस्फाई किया, 182 नहीं किया, वो बंदा भी आर एन ओ आर बनेगा. दिस फॉलो ऑल्सो इज आर एन ओ आर. सो नंबर 1 who has satisfied 120 but not 182, he is RNOR, and this fellow is also an RNOR because we are trying to create a deeming fiction. वो बंदा एक्चुअली है नहीं रेजिडेंट, बट हम कुछ तो करके उसको रेजिडेंट बना दे रहे. बोल रहे ना, समझ गए ना? हम कुछ तो करके रेजिडेंट बना दे रहे आपको, बट आपको ROR नहीं बोलेंगे बेटा, RNOR बोलेंगे. फर्क पता है ना अपने को? ROR है तो पूरा का पूरा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, RNOR है तो इंडियन इनकम तो कैसे भी टैक्सेबल है, बट फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन 2 केसेस. बिजनेस इनकम कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशनल इनकम व्हिच इज, दैट्स इट, दैट शुड बी द आंसर. गुड, क्लियर. चलो बेटा लिखो, क्या बोला मैंने? An individual should be treated as deemed resident if the following conditions are satisfied. An individual should be treated as a deemed resident if the following conditions are satisfied. Number 1, he is a citizen of India. He is a citizen of India. He is a citizen of India. Number 2, total income other than income from foreign sources. बराबर बेटा? Total income other than income from foreign sources. Total income other than income from foreign sources. Total income other than income from foreign sources is greater than 15 lakhs during the previous year. बराबर ना? जो भी बात करें प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, सब समझ गए ना? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ये सब क्या है? See, you one point to understand, we just started our classes just 1 week back, that's it. But in 1 week, we gained so much of knowledge on what is tax, what is PY, what is AY, what are the tax rates, what is capital gain, what is gross total income, what is total income, what is deduction, what is exemption, how many types of deductions are there, what is the golden rule of income tax, what are the types of heads of income, residual status क्या है, TDS क्या है, refund कब आता है, rebate क्या है, lottery income tax कब कैसे लगता है. बराबर ना यार? So that's how it is. That's how growth should be, you know. That's how growth should be. End of the day, night when you sleep, you should get satisfaction. Yes sir, आज कुछ सीखने को मिला है. Yes, आज कुछ मजा आया है. Yes, आज कुछ किए. Then that is promising. No, that's where you should feel happy, no. See, for example, I take a class to night when I sleep, I feel happy. हाँ अरे आज क्लास मस्त हो गया यार. Special cases तो पूरा resound ही आ गया पूरा. अभी भी आ रहा है. Correct ना यार? That's how we should feel happy, no. And then we can comfortably sleep. चलो क्या लिखे आप? टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मोर देन 15 lakh during the previous year. Third condition, he is not liable to pay tax
he is not liable to pay tax in any other country. Not liable to pay tax in any other country. सर हो गया? सर क्लियर है? एक बार जाने से पहले जस्ट गिव 5 मिनट्स, ओपन योर मटेरियल, पेज नंबर 25. डोंट वरी, आज कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, कल ही करते, टेंशन मत लो. पेज 25 ओपन करना बेटा एक बार. किए क्या? चलो वहां पे देखो डीम्ड रेजिडेंट वाला पढ़ो एक बार. An individual shall be treated as what? Deemed resident. If the following conditions are satisfied. बेटा बोलो, बिना देखे बोलो क्या क्या कंडीशन है. Number 1, citizen of India. Number 2, total income is more than 15 lakh other than income from foreign sources. And last one is not liable to tax in any other country. नीचे एक 2 पॉइंट्स है बेटा जो आपको समझना है. एक बार देखो, सिंपल है बट सी दैट. Expression income from what, sir? Foreign sources means what? Income which accrues or arise where? And which is not deemed to occur or arise in India. But bracket, you see one point. Income which accrues or arise outside India, except income derived from a business controlled in or profession set up in India. So getting my points? Everybody? Right. So it should not be an, when I say income from foreign sources, it basically means a foreign income. It's accrued and arise outside India. But it's not deemed to occur as in India. Because if it's deemed to occur as in India, it becomes what income? Indian income. बेटा बराबर है. Next line देखो. Liable to tax means what? Means that there is an income tax liability on such person under the law of that country for the time being in force. It also includes, ये important है sir, please underline this point, very important. Exam में आया नहीं but आ सकता है. It also includes a person who has subsequently been exempted from such liability under the law of that country. That means what? He is liable to pay tax, but subsequently they gave exemption. But we still say that he is liable to pay tax. But country like Mauritius, Dubai, it's not like that. Mauritius, Dubai ऐसा नहीं कि tax वाले बोलेंगे बाद में exemption देंगे. वो है ही tax free country. That's why we call them as tax havens. We call the tax free countries as tax havens. You're getting my point? एक बार वापस last पढ़ते एक बार. Liable to tax means what? There is an income tax liability on such person under the law of that country for the time being in force. And it also includes a person. What also includes? Liable to tax. Also includes a person who has subsequently been exempted from such liability under the law of that country. मतलब taxable है, but बाद में उसको exemption मिला है. फिर भी हम बोलेंगे liable to tax. क्यों? अगर आपको not liable to tax बोलेंगे तो deemed resident बन जाएगा ना वो. So speak out. So for example, one person went to US. Okay? He is liable to tax in US. But subsequently he got exemption. Did he pay tax? But still he will not become deemed resident. Because he is liable to tax in US. Clear? Exemption मिला बाद में अलग बात है. But he is liable. Yes. So he will not become deemed resident. Because deemed resident concept तभी आएगा only when he is not liable to tax in another country. And that fellow is Indian citizen. And that fellow's total income other than foreign sources more than 15 lakh. सबको समझ में आया? Strictly speaking, today I taught you only 4 points. 3 special points I discussed and 1 deemed resident. ये तो जो भी है concept तो है ही. But special points सबको clear है sir? Why I took so much time for this? Because today morning only I thought I'll complete special points and if time permits we'll see some problem. But बीच में समझ गया मैं. But इधर से इधर ही हो जाएगा काम आज. The reason for that is because we should get clarity on special point. And now that we have spent almost 3 hours of our time, we got good clarity on special points. Are we clear with all this? चलो बेटा स्पेशल पॉइंट्स कितने बेटा? 3. और तीनों में भी वर्ड्स है इंडियन सिटीजन. अगर इंडियन सिटीजन है नहीं तो स्पेशल पॉइंट का कहानी कभी आ ही नहीं सकता है. बराबर है सर? फर्स्ट वाला जा रहा है, सेकंड वाला जा रहा है. फर्स्ट वाला एम्प्लॉयमेंट है, सेकंड वाला क्रू ऑफ शिप है, लास्ट वाला क्या है बेटा? कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. व्हाट इज द कंडीशन? 182 डेज है तो रेजिडेंट. 182 डेज नहीं है फिर भी वो रेजिडेंट बन सकता है अगर 120 या 365 मॉडिफाइड सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो. और ये मॉडिफाइड का स्टोरी इसको एप्लीकेबल है जिसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस. मतलब इंडियन इनकम देख रहे हैं यार बेसिकली अपन.
Correct here? That's it. Thank you so much. Take care. See you all tomorrow. And tomorrow we'll solve a lot of interesting questions. Carry your material. Already a lot of people have taken the material, but they're not carrying to the class. Please carry it. कल क्वेश्चन भी थोड़े सॉल्व करते हैं अपन. एंड कल क्लास है सर. चल कल क्लास है. अपना सुबह सुबह ही क्लास है ना यार. नहीं कोई बात नहीं, हम भी बैठेंगे इधर. ठीक है. थैंक यू. टू माई नॉलेज आई थिंक अदर क्लासेस आर हॉलीडे. आई बिलीव शायद हॉलीडे देंगे, बट अपना टैक्स क्लास तो रहेगा यार. बिकॉज आई टेल द रीजन वाई. रीजन इज वन रीजन. ऑलरेडी संडे जा चुका है, ये संडे भी जाएगा, 2-3 संडे ऐसे ही जा रहा है. एंड नेक्स्ट वीक आई ऑलरेडी टोल यू दैट 2-3 days हॉलीडेज विल कम बिकॉज ऑफ विसर्जन एंड ऑल. हाँ कल सिर्फ टैक्स रहेगा. हाँ तो वही बोल, तो फिर कर लेंगे ना. अरे यार कॉपरेट करो. आई टेल द रीजन वाई. 2 reasons आई टोल यू ऑलरेडी. फेस्टिवल्स इतना ज़्यादा है ये सीजन में कि दसरा दिवाली बहुत कुछ है. और छोटा मतलब मेरा भी एक्चुअली मैं बता चुका ऑलरेडी आपको कि मेरा हैदराबाद में एक बैच चल रहा है विच आई स्टॉप्ड इन बिटवीन. आई हैव सम मोर क्लासेस टू कंप्लीट देयर. सो नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू हैदराबाद. सो नेक्स्ट वीक द रीजन आई प्लान नेक्स्ट वीक इज ओनली बिकॉज 3 days कैसे भी छुट्टी रहेगा आपको बिकॉज ऑफ विसर्जन एंड ऑल. 2-3 days एक्स्ट्रा आई एम टेकिंग एंड आई एम गोइंग. दैट्स हाउ आई प्लान. सो दैट यू विल ऑल्सो नॉट फील दैट कि क्लास जा रहा है ऐसा कुछ है उसकी वजह से. ठीक है ना यार, आप चिंता मत करो. आई विल प्लान एंड इंश्योर दैट वी विल कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम इन अ परफेक्ट वे. बिकॉज सिंपल, मुझे सिर्फ 2 ही चीज आता है, एक तो पढ़ाना, दूसरा भी बस क्लैरिटी आपको. ठीक है ना यार, वो परफेक्ट करेंगे हम. ठीक है, तो कल क्लास है सर. और कल हम लोग एक काम करते हैं, 8 बजे मिलते हैं सर. 10-10:30 के आसपास क्लास क्लोज कर लेते हैं. बिकॉज 11 बजे के बाद शायद यहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाएंगे. हम लोग 10-10:30 के आसपास क्लास क्लोज कर लेते हैं विदाउट ब्रेक. 2-2.5 hours विल टेक क्लास एंड क्लोज इट ऑफ. ठीक है दोस्तों, प्लीज कॉपरेट करो, कल आ जाओ. बाकी दूसरे क्लास है या नहीं है मुझे तो नहीं पता. अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपना क्लास तो रहेगा. 8 to 10:30 समझ के चलो. 10:15 10:20 के आसपास क्लोज कर देते. एक 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो चुन्नू मुन्नू HUF कंपनी है ना, हाँ वो खत्म करके छोड़ देंगे और 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. परसों आके बाकी स्पेशल कॉन्सेप्ट, स्पेशल क्वेश्चंस. ठीक है, कल सिंपल ही करते. और जल्दी क्या मुझे चलेगा, मतलब आपको चलेगा क्या? मेरा क्वेश्चन वो है. हाउ मेनी फिर ओके विद 7 o'clock? अच्छा बाकी लोग नॉट ओके. नहीं सबका देखना पड़ेगा तो नहीं सबका देखना पड़ेगा. इट्स ओके, छोड़ दो, कोई बात नहीं. 8 बजे मिलते. अरे नहीं छोड़ना दोस्त, सबका देखना पड़ता है. नहीं ठीक है, 8 o'clock लगा देते. 10:10 का छोड़ देते, नो प्रॉब्लम. आधी घंटा छोड़ दो, कोई बात नहीं. ठीक है ना बेटा. 7:30 चलेगा दोस्त तेरे को? 7:30 चलता है क्या? 7:30 सबको चलेगा? एवरीबडी 7:30 इज ओके? चलो डन. क्लास 7:30 to 10 क्लोज. 10 के अंदर ही क्लोज कर देते. ठीक है, बस आप भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ उसके बाद. बोलिए मैडम. Demotivation for the taxpayer मतलब you have to understand that we are taxing only the Indian income, no? Foreign income तो आपका टच तो है नहीं, कर रहे, except that business and profession. Correct, but we are taxing only. See, if he's fine, he's a demotivation. He's becoming a demoted resident. I'm not disputing that fact. But by becoming demoted resident, is he becoming ROR or RNOR? RNOR, correct? So will he pay tax only on Indian income or not? Even if you would have been non-resident, still you would have paid tax on Indian income, no? Where is it making difference for you only? That foreign income in 2 cases. That, no option, we have to pay. Done guys, thank you so much. Kal subah milte 7:30 ko. Done. Thank you. Thanks for cooperation. Thank you.